recording also? Okay. Can everyone please switch on their cameras? Okay, I can see many people have switched on their cameras. I can see Abhiraj sir, Vinod sir, Ritik sir, Himanshu sir, Shubhashish sir, Kanan sir, Hargopal sir, Lakshay sir, Rajesh sir. Okay, I can see many people now. It's really nice to, see faces and not talk to thumbnails, obviously. Okay, okay. So, let's just begin with the class. Let's begin with a basic introduction of everyone. So first I'll introduce myself. My name is Richa and आज की class में मेरा role क्या रहेगा? I'll be a facilitator for today. Now what is the role of a facilitator? Basically to solve each and every query that a student has. ठीक है? So I am here to make sure that each and every question, each and every doubt that you have within the class or after that, I'm here to solve those. ठीक है? So I'll ensure that each and every one of you gets the maximum value out of today's session. Okay. Now, I can see many of you are at home. Some of you are out also. So make sure that each and every one of you has a pen and paper with yourself. Okay. Even I am carrying one. Okay. मेरे पास भी एक pen and paper है because I'll also be learning some things today. I'm also a beginner in trading. I'll also be learning the same things that you will be learning. So I want every one of you to keep a pen and paper with you. Okay. Now, what is the, why I'm asking you to keep a pen and paper? It's very simple because Manish sir has been teaching for about now like so many years. He has already taught more than 1,000 students in trading itself. So, unki PPT में not everything will be written in the PPT. ठीक है? तो आप जो देखेंगे, जो मनीष सर जब पढ़ा रहे होंगे, तो वो कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जो पीपीटी में नहीं लिखी होगी. ठीक है? तो you will have to write those pointers down for future reference. Obviously if you are spending 2 hours, अगर आप आज 2 घंटे लगा रहे हो क्लास में, तो there has to be a point ना कि आप कल उस चीज को implement कर सको या परसों उस चीज को implement कर सको, right? तो keep a pen and paper with you so that आप वो चीजें लिख पाओ जो मनीष सर सिखाने वाले हैं. ठीक है? पहली चीज तो यही. Now मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है. I want every one of you also to introduce yourself in the chat only. आप अपने बारे में बता दो मेरे को. What's your name? आपने कहाँ से ज्वाइन किया है या फिर what's your trading experience? ठीक है? Just a basic introduction and also your occupation. Now ये चीजें why is it important for me? Because this is the only way I can know you guys. ठीक है? आपके बारे में जितना ज्यादा मैं जान पाऊंगी उतना ज्यादा I'll be able to create the maximum value out of today's session. Okay. Arvind says, I do not have any experience in trading. Rajesh, hi Rajesh, hi Arvind, hi Himanshu, pursuing MBA in finance. Okay, that's nice, that's nice. बाकी सब भी एक basic introduction लिख दो please. Okay, सुंदर सर ने एक कुछ डाला है link. I would ask everyone to not, send such kinds of links because we won't be sending any links. So I would request everyone कि spam नहीं करते हैं chat में. ठीक है? Okay. Diljit sir, hello Diljit sir, hello Sudhanshu sir. Okay, pursuing MCA. Hello Pavan sir, hello Rajesh sir. Haragopal sir, working in steel plant, trading only since 1 year. Okay, I am doing job. ठीक है. I am Tushar, pursuing engineering. Okay, I can see many people are from different parts of the country. ठीक है? So what I'll be doing right now is basically I want every one of you अब एक क्लास में when people are from different parts of the country एक ना usually एक confusion रहती है कि आज की क्लास में पोल मतलब आज की क्लास में लैंग्वेज कौन सी यूज होने वाली है. ठीक है? कुछ some people are comfortable in English and some people are comfortable in Hindi. So what we'll be doing is ये चीज हम पहले ही solve कर देते हैं before we start with the class. Launched a poll for you. ठीक है? आप लोग एक बार poll में आंसर कर दो कि in which language do you prefer today's class. So basically it will give me an idea कि in which language do you prefer today's class.
तो उसी हिसाब से मैं आज की क्लास का फ्लो डिसाइड कर लेंगे। मैं मनीष सर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर लूंगी वही फ्लो। ठीक है। राइट नाउ 76 people, 80 people have answered. We're more than 100 people, 118 people. I want every one of you to answer in which language are you comfortable for the class. I'll be waiting for the next 10 seconds. Okay. Okay. Now I'll be ending the poll in the next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Go. Okay. So I'll share the results with you guys. Okay. You can see 41%. That is the majority today. They want a mix of English and Hindi. Okay. So what we'll do is basically there are some people, more than 50% of people, they want mix, मतलब जिनको हिंदी या इंग्लिश एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी. तो what we'll do is that this will solve this very quick fast. क्या करेंगे, मैं मनीष सर को बोल दूंगी, he'll explain one concept in English and then repeat the concept in Hindi. तो वो एक कॉन्सेप्ट को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाएंगे. तो वो बेनिफिशियल कैसे, सबको समझ में आ जाएगा, उससे जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश भरा है उनको भी आ जाएगा और हिंदी भरा है उनको भी आ जाएगा. ठीक है. तो आई थिंक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इज सॉल्व्ड फॉर एवरीवन. ठीक है. जस्ट गिव मी अ यस और नो कि सबको ये चीज बहुत क्लियर हो गई है कि विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड विल आल्सो बी यूजिंग एग्जांपल्स. ठीक है. चार्ट्स भी यूज होंगे, एग्जांपल्स भी यूज होंगे, क्वेश्चंस डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे, पोल्स होंगे, क्विजेस होंगे सेशंस में, इस सेशन में. So you don't have to worry. We'll make sure each and every one of you gets to understand whatever is taught in the class. ठीक है. Okay, I can see many people typing yes. Okay. Now this is the second poll that I have launched, experience poll. I want to know what is your overall experience in stock market. Now basically why I want to know this is if I know what is the experience of most of the people in today's class, I'll be able to decide the flow of the class. अगर ज्यादा बिगनर्स हैं, जैसे मैं देख पा रही हूँ 85% बिगनर्स, I'll also share the results with you guys. ठीक है. तो 85% अभी के लिए I can see are beginners. तो we'll start off with the basics first. देखो स्ट्रैटेजी तो we are going to cover strategy. ठीक है. लेकिन उससे पहले जो बिगनर्स है जिनको कैंडलस्टिक्स भी अच्छे से क्लियर नहीं होंगी अभी, ठीक है, जिनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो विल क्लियर दोस फर्स्ट. हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 से 20 मिनट्स विल स्टार्ट विद द कैंडलस्टिक्स, उनको रिवाइज करेंगे. ठीक है. जिनको आती हैं ये सब चीजें उनके लिए रिवीजन हो जाएगी. एंड देन उसके बाद विल बी मूविंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी, दैट इज ट्रेडिंग विद गैप्स. ठीक है. गैप्स सबको पता होगा, नहीं भी पता है नो इश्यूज, मनीष सर अभी उनको समझा देंगे सब कुछ आप लोगों को. ठीक है. I'll be ending the poll. मैं आपको दिखा देती हूँ. There are 2 people who have experience of more than 5 years. If comfortable, अपने आप को एक बारी प्लीज चैट में इंट्रोड्यूस कर दो. ये 2 लोग कौन है जिनको 5 years से ज्यादा एक्सपीरियंस है? I would really like to know them. ठीक है. चलो अभी तक just give me a yes or no in the chat कि अभी तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है. We have not begun with the class. We have not started with the concepts as of now. But I want कि जो बेसिक चीजें हैं वो एक बारी क्लियर हो जाए. Just let me know in the chat. Arvind says yes. Rupendra sir says yes. Ritik says yes. Arindam says हाँ जी समझ गए. Akshay says yes. Okay. ठीक है. तो language done है and expertise level भी मेरे को पता चल चुके हैं. Now we'll be beginning with today's session. Before we begin with the class, I would like to introduce Manish sir. Manish sir के बारे में बता देना चाहती हूँ, who is the instructor for today. Now he has been in the financial industry for about 15 to 20 years. ठीक है. And he is a CFA level 1. Initially वो BSE, that is Bombay Stock Exchange, वहाँ पे वो head trainer थे. And post that now he's a fund manager at an AMC. अब AMC क्या होती है? An asset management company, where he takes money from HNIs, बहुत बड़े-बड़े लोगों का पैसे, basically he invests them on their behalf. So you can assume कि जैसे वो इतना मतलब he handles crores of capital. ठीक है. तो वो ऐसे ही तो बिना
प्रोफेशनलिज्म के बिना स्ट्रैटेजीज के तो नहीं लगाते होंगे. इट्स वेरी ऑब्वियस कि if he's been in this industry for more than 15 years now, he has some experience, right? तो you'll get to know that when he'll be teaching ना, आपको पता चलेगा कि he is such a professional person. उनकी strategies back tested होती है, जो भी वो पढ़ाते हैं. He has always back tested those strategies, and you'll see that. मतलब मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You'll see that कि कितने अच्छे से वो पढ़ाने वाले हैं. He's already taught more than 1,000 students as of now in this domain itself, and let's hope कि आप सबको समझ में आए जो वो पढ़ाने वाले हैं आज. Let me just check if Manish sir is here. Yeah. Okay. Manish sir, are you there? Can you hear me? Yes, Richa. Good evening. Good evening, sir. कैसे हैं आप? Hey, how are you? I'm also good. I'm also good. मैंने basic polls ले लिए हैं. I've already taken the basic polls. Like 41%, that's the majority want a mix of English and Hindi. ठीक है? And also we would start with the basics only. ठीक है? Okay, just give me a minute. We'll start. हाँ जी, हाँ जी. Although I've not cleared the agenda for today as of now, मैं बता देती हूँ कि in today's class what we'll be doing is, मतलब first we'll be covering the basics of candlesticks, then we'll be starting with the intraday trading strategy, then swing trading strategy, and एक bonus concept भी cover होगा, position sizing, that will also be covered in the later half. ठीक है? Manish sir, I think you can. Yeah, so screen is visible. Can you please? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Screen is visible. Okay. Yeah. So good evening, guys. Good evening to everyone. Now, before we start with today's session, okay, I'd like to give my brief introduction. My name is Manish Sachdev. By profession, I'm a trainer. I take training sessions on CFA Level 1 program and on technical analysis. Now, in my training career, guys, I got opportunity to work with BSc Institute Limited and with ITM group of institution as a trainer. So till date, I have total 12 years of experience in training field. I am also a founder of Sri Sai AMC. Now at Sri Sai AMC, what we do, we basically invest our client money in option writing strategies. Now the goal is to generate 2 to 3% return every month on client's capital. So this was the brief introduction about myself. So Richa, can you please introduce this contest? Yes, sir. Yes. So for everyone who's in today's class, we have an added benefit for you guys. ठीक है? तो पहली चीज, so there's a masterclass contest going on, and उसमें you can win prizes worth ₹10,000. अब इसके लिए you don't have to do anything special. इसको जीतने के लिए कुछ नहीं करना है. One basic thing, you have to be really active and attentive till the end of the class. I can see 142 people in the class, and I want every one of you to really remain active till the end. ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है. आप पढ़ने आए हैं, मनीष सर जो पढ़ा रहे होंगे, आपको बस सुनना है ध्यान से. जब मनीष सर क्वेश्चंस पूछेंगे, क्विजेस होंगी, you have to answer them honestly. ठीक है? You just have to answer each and every question correctly in the poll, and 5 people will be given free Amazon vouchers from our side. Second prize that you will be getting is a free hotel stay in the Fab hotels. अब उसका criteria यही है कि if someone asks a question that is really valid and adds value to the whole class, ठीक है, सबको कुछ नया सीखने को मिल रहा है उस question से, that person will be getting a free hotel stay in the Fab hotels. And third, you'll be getting 2 free ebooks. ठीक है, उसका criteria मैं बाद में reveal करूंगी in the later slides. ठीक है, so I hope each and every one of you is really excited, and also you'll be getting a certificate of the masterclass that you've attended in the end of the masterclass. So I'll be sharing a feedback form with you guys, and उसको fill करने के बाद you'll be getting a free you'll be getting the I'm really sorry you'll be getting okay, yeah. So after I send you the feedback form, you'll be getting a certificate of the class in the end of the class. Okay. So I think Manish, I've already cleared the basic things. We'll be sharing the PPT and we'll be sharing the recording of the class in the WhatsApp group itself, not the PPT, but the recording will be shared in the WhatsApp group itself. Manish, I think we can begin with the session. Okay. So guys, this is the class outline. Okay, what we are going to cover in today's session.
तो देखिए पहले हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ यू आर बिगिनर्स, सम ऑफ यू आर एक्सपीरियंस. सो अलाउ मी, गिव मी 15 to 20 मिनट्स सो दैट वी ऑल आर ऑन सेम पेज. तो हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे. पहले बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस वन वेरी सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, काफी सिंपल स्ट्रैटेजी, इसको आप यूज करके इंट्राडे में ट्रेडिंग आप अच्छे से कर सकते हैं. दैट वी विल डिस्कस in second half of webinar. Guys, what we will do, we will discuss swing trading strategy. Okay, and I will also cover the concept of position sizing. So maybe after intraday trading strategy we can cover position sizing concept. Okay, so this is very important, isko aap risk management bhi keh sakte ho. So this is going to be a class outline, okay, for today's session. Now this is the very first slide in front of you. Okay, types of people we have in stock market. सो अगर आप बिगनर हो, अगर आपने रिसेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. ओके, वी हैव इन स्टॉक मार्केट. सो ऑन लेफ्ट साइड यू कैन सी वी हैव इंट्राडे ट्रेडर, एट द सेंटर वी हैव स्विंग ट्रेडर, एंड ऑन एक्सट्रीम राइट यू कैन सी वी हैव अ इन्वेस्टर. नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में क्या फर्क होता है, उसे आपको समझना है. देखिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स डू ग्राफ एनालिसिस. ओके, दे ट्राई टू स्टडी बिहेवियर ऑफ प्राइसेस. Now, when it comes to investments, what investors do? Investors study financial statements. Now, when I'm saying financial statements, okay, this include profit and loss statement, balance sheet, cash flow statement. They also study business model of a firm, and then they take a decision. क्या उनको long term के लिए पैसे invest करने चाहिए कि नहीं? So this is the brief difference between trader and investor. एक trader graph को analysis करता है, and when it comes to investment, investors study financial statements. देखिए आज का जो सेशन है, ओके, टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वी आर हियर टू डिस्कस सम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. सो विद दिस नोट व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली गिव यू द इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस. अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं. सो यहाँ पर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्राफ है आपके सामने. अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि पास्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस ने कैसे परफॉर्म किया. नाउ द जॉब ऑफ ट्रेडर और द जॉब ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट इज टू स्टडी, okay, this price behavior and try to form a conclusion, okay, how prices are going to perform in coming trading session. तो इसे हम कहते हैं technical analysis in very simple language. In layman language you can say technical analysis means analyzing historical prices to form a conclusion how prices are going to perform in coming trading session. Now guys, in technical analysis we have a very important concept called Japanese candlestick. देखिए candlestick पहले राइस ट्रेडर्स यूज करते थे जापान में in 17th century. Today candlesticks are used by traders, okay, across the world. तो यहां पर आप देखिए स्लाइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट में यू कैन सी वी हैव अ इमेज ऑफ कैंडल. नाउ एक कैंडल की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है. यू कैन रीड द नेम, अपर शेडो, रियल बॉडी, लोअर शेडो. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडल. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन इन ब्रीफ. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद रियल बॉडी. ओके, व्हाट इज रियल बॉडी? देखिए कैंडल में जो रियल बॉडी होती है वो आपको डिफरेंस बताती है बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. So take for example, morning में stock price 100 पे open हुआ, evening में बंद हुआ 105 पे. So what is the difference between opening and closing? I can say the difference is ₹5. Okay, so I can say this candle is having a real body of ₹5. तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है सेंटर पे. Okay, this is nothing but real body of candle. Now next is upper shadow. Now upper shadow give you the information about day high. Okay, पूरे दिन में प्राइस ऊपर कहाँ तक गई. So let's say stock price closed at 105. But before closing at 105 it went up till 108. तो 108 को हम कहेंगे डे हाई. एंड ये जो लाइन आपको दिख रही है रियल बॉडी के ऊपर, दिस इज अपर शेडो. इन द सेम वे वी हैव अ लोअर शेडो. रियल बॉडी के नीचे जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज लोअर शेडो ऑफ कैंडल. नाउ लोअर शेडो गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डे लो. ओके, पूरे दिन में प्राइस नीचे कहां तक है. सो लेट्स से स्टॉक प्राइस ओपनड एट 100 बट आफ्टर ओपनिंग एट 100 इट केम डाउन टिल 97. तो 97 को हम कहेंगे डे लो. And this line will be termed as lower shadow of candle. तो रियल बॉडी आपको डिफरेंस बताता है between opening price and closing price. Upper shadow give you the information about day high and lower shadow give you the information about day low. Now moving ahead guys, we can divide candlestick into three types. In general हम candlestick को तीन categories में divide कर सकते हैं. Okay, so on extreme left you can see we have a bullish candle. And on right you can see we have a bearish candle. At the center we have a doji candle. Now again we will study okay these three types one by one. So first we will start with bullish candle. इसको पहले हम समझते हैं. Okay, why this is bullish candle that we will understand. देखिए यहाँ पर opening price, okay, O stands for opening price. आप देखिए opening price जो है वो
नीचे है कंपेयर टू क्लोजिंग प्राइस। तो प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर बंद हुई है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बुलिश कैंडल। आई कैन से बायर्स आर इन कंट्रोल ऑन दिस डे। ठीक है, ये दिन पे बायर्स कंट्रोल में थे, प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर बंद हुई है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बुलिश कैंडल। नाउ एक्सट्रीम राइट पे आप फोकस कीजिए, दिस इज बेयरिश कैंडल। Here you can see opening price is more than closing price. तो प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे बंद हुआ है, तो I can say sellers were in control. So that's why this is bearish candle. Now look at the center. Okay, this is doji candle. यहां पर आप देखिए opening price, closing price both are almost same. तो मॉर्निंग में जहां पर स्टॉक प्राइस ओपन हुआ उसी के आसपास जाके बंद हुआ, एंड यू गॉट अ कैंडल विच इज लुकिंग लाइक अ क्रॉस सिंबल, राइट। तो उसको हम डोजी कैंडल कहेंगे। नाउ डोजी रिप्रेजेंट इनडिसिसिवनेस। इनडिसिसिवनेस मींस वी कैन नॉट डिसाइड, okay, we cannot decide which side is more strong, whether buyers are more strong or sellers are more strong. So that's why this is called as a doji candle. We cannot decide buyers strong है कि sellers। देखिए bullish candle में हमने क्या conclude किया, buyers are strong. In bearish candle what we concluded, sellers are strong. So when it comes to doji candle we cannot say which side is more strong, we can say both sides are equally strong. I hope guys these three types of candles are very clear. Okay, Akshay, you need to wait for 10 to 15 minutes. Okay, I will take time to explain the basics ताकि जो beginners हैं उनको problem ना हो. Okay, now we will conduct a very small quiz to check your understanding level. जितना मैंने आपको explain किया कि आपको चीजें समझ में आई है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक कैंडल दी गई है, इसमें आपको क्लोजिंग प्राइस बताना है, which is the closing price. Okay, यहाँ पर चार प्राइसेस आपको दिख रही है, 122, 120, इनमें से आपको क्लोजिंग प्राइस बताना है। Okay, you can answer in the poll. Okay, I will request each and every participant आप poll में आंसर कीजिए so that we come to know. Okay, कितनी चीजें आपको समझिए। Yeah, in this poll आपको बताना क्या है, what will be the close of this candlestick. ठीक है, you given 4 options, 120, 122, 115 and 118. Manish, can we clear what is the color of the candlestick? Yes, so guys, this is bullish candle. Okay, you can consider this as the bullish candle. Yeah, you have, this will be a bullish candle. That means you have to tell what will be the close of the candle. Bullish candle means green, right, Manish? Right, green or white. Okay, bullish candle. Okay, okay. Okay, I'll be ending the poll now. So 42% people say 120 will be the close. Okay, great. Guys, अगर आपने bullish candle इसको assume किया है, 120 is correct answer. अगर आपने इसको bearish candle assume किया है, so in that case 118 is correct answer. Okay, तो पहले bullish candle के हिसाब से समझते हैं। देखिए bullish candle में opening नीचे होता है, 118 is opening, 120 is closing, 122 day high, 115 day low. अगर इसको आप bearish candle consider कर रहे हो तो 120 opening हो जाएगा, 118 will be the closing in this case. Okay, now we will move ahead and we will discuss something on trading setup. ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए एक ट्रेडिंग सेटअप आपको तीन चीजें बताता है, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, स्टॉप लॉस लेवल। नाउ एंट्री लेवल मींस एट व्हाट प्राइस यू विल ओपन ट्रेड, आप कौन से प्राइस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एग्जिट लेवल मींस वेयर यू विल बुक प्रॉफिट, एंड स्टॉप लॉस मींस इन केस ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप लॉस कहां पर बुक करेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। सो एज अ ट्रेडर जब तक आपके सामने ये तीनों चीजें नहीं है ऑन पेपर, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, डू नॉट इनिशिएट एनी ट्रेड। सी व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। तो पहला डिसिप्लिन आपको ये समझना है, ट्रेड ओनली व्हेन यू सी अ सेटअप। आपको ट्रेड तभी इनिशिएट करना है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, आप ट्रेड तभी इनिशिएट करो जब आपको सेटअप दिखे। ओके, सेटअप दिखे मींस एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस आपको पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इन ट्रेड।
Now we will understand first what is stop loss, then I will explain about target price. तो पहले stop loss समझते हैं. This is very important because see in technical analysis there is no 100% guarantee, there is no 100% certainty कि अगर आपने ट्रेड ओपन किया है तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा. एट टाइम्स ट्रेड आपको लॉस भी देके जाएगा. एट टाइम्स प्राइस विल नॉट बिहेव एज यू हैव प्रेडिक्टेड. तो वो केस में आप कहां पर अपना लॉस बुक करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल. लेट्स से यू बॉट सम शेयर्स एट 100 rupees and you are expecting price will test 110 level, but unfortunately price is coming down. Price 100 से नीचे आ रहा है 99, 98, 97. एज अ ट्रेडर यहां पर आपको लॉस हो रहा है. सो आप क्या प्राइस पे अपना लॉस बुक करेंगे? ओके उसे हम कहेंगे स्टॉप लॉस. लेट्स से यू विल वेट मैक्सिमम टिल 95. जैसे ही प्राइस 95 दिखे यू विल बुक लॉस. तो 95 रुपीज को हम कहेंगे स्टॉप लॉस लेवल. नेक्स्ट इज टारगेट प्राइस. टारगेट प्राइस मींस वेयर यू विल बुक प्रॉफिट. अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आप प्रॉफिट कहां बुक करेंगे? सो कंटिन्यूइंग विद सेम एग्जांपल, यू बॉट सम शेयर्स एट 100 एंड यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइस विल टेस्ट 110. तो 110 को आप टारगेट प्राइस कह सकते हैं. ओके यू विल बुक प्रॉफिट एट 110. नाउ वी विल डिस्कस इंट्राडे ट्रेडिंग. ओके व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली. सो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन. इंट्राडे ट्रेडिंग रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स ऑन सेम डे बिफोर मार्केट क्लोजेस. देखिए इंट्राडे ट्रेडर्स क्या करते हैं? दे बाय एंड सेल शेयर्स ऑन सेम डे. दे डू नॉट हैव एनी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, दे डू नॉट हैव एनी ओवरनाइट पोजीशन. दे बाय एंड सेल शेयर्स ऑन सेम डे. तो उसको आप डे ट्रेडिंग भी कह सकते हो, उसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कह सकते हो. नाउ देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग. द वेरी फर्स्ट एडवांटेज यू कैन सी, वी डू नॉट हैव एनी ओवरनाइट रिस्क. देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो देयर इज नो ओवरनाइट रिस्क. See, just now I told you intraday traders do not have any overnight position. They do not have any carry forward position. If they do not have any overnight position, so there is no overnight risk. Now, what is overnight risk? उसे भी हम example के साथ समझ लेते हैं. Let's say you bought the shares of ABC Limited at 100 rupees. Market closed at 330. Now, unfortunately, you got some negative news related to ABC stock. अगर न्यूज देखिए काफी ज्यादा नेगेटिव है तो इसका इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल सकता है. इट इज पॉसिबल नेक्स्ट डे यू विल सी गैप डाउन ओपनिंग. प्राइस विल डायरेक्टली ओपन एट 90 और बिलो 90. दिस मींस यू डू नॉट गेट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. तो इसे हम कहते हैं ओवरनाइट रिस्क. बट जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वी बाय एंड सेल शेयर्स ऑन सेम डे, सो देयर इज नो ओवरनाइट रिस्क. सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग. देयर इज नो ओवरनाइट रिस्क. नाउ सेकंड एडवांटेज इज लिवरेज. देखिए आज के डेट में ब्रोकर्स आपको 5 टाइम्स लिवरेज देते हैं इंट्राडे में. लेट्स से यू हैव अ ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ 10,000, सो 10,000 into 5 यू कैन ट्रेड अप टू 50,000 इन इंट्राडे. तो जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है आप into 5 कीजिए. लेट्स से योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 20,000, 20,000 into 5 you can trade up to rupees 1 lakh in intraday. So this is the second advantage you have. Okay, you get 5 times leverage in intraday. Now third advantage is short selling. किसी भी स्टॉक के ऊपर आपका bearish view है, okay, you can initiate a short sell position in that counter. So this is the third advantage. Now let's focus on disadvantages. What are the some disadvantages of doing day trading? तो पहला disadvantage मुझे दिख रहा है high risk. See, doing intraday trading is very risky because price can take U-turn any time during the day. So as a trader ये आपको पता होना चाहिए doing intraday trading is risky. Now second disadvantage is it is not a part-time job. It need focus, detail and mental strength. See, doing intraday trading means you have to be in front of screen, okay, from 9:15 till 3:30, because we do not know at what time we will get a very good trading opportunity. तो आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा 9:15 से लेके 3:30 तक. But let's say you are doing job or you are doing a business and you cannot devote time in front of screen, then intraday trading is not possible because you cannot take this as a part-time. So these were the some advantages and disadvantages of doing intraday trading. Now next is we will discuss rules for taking intraday trade. Now this is extremely important slide. I will request each and every participant इसका आप screenshot ले लीजिए. देखिए जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं. तो यहाँ पर 3 रूल्स हैं, उसे हम फोकस करते हैं. रूल नंबर 1, ऑलवेज नो एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग इन ट्रेड. तो ये रूल हमने पहले भी डिस्कस किया इन प्रीवियस स्लाइड्स. एज अ ट्रेडर आपके सामने ये तीनों लेवल्स ऑन पेपर होनी चाहिए. एट व्हाट प्राइस यू विल एंटर, कहां पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर ट्रेड आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है तो लॉस कहां पर बुक करेंगे.
ओके, मेक श्योर यू हैव दीज 3 लेवल्स ऑन पेपर, उसके बाद ही आप ट्रेड स्टार्ट कीजिए, इनिशिएट कीजिए. नाउ सेकंड रूल इज ओनली एंटर इन ट्रेड इफ यू आर गेटिंग मिनिमम 1.5:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. ओके, प्रॉफिट टू लॉस रेशियो, उसको आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कह सकते हैं. देखिए, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:1.5. दिस मीन्स इफ यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 1 पॉइंट, अगर आप 1 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में मिनिमम प्रॉफिट आपको 1.5 पॉइंट का होना चाहिए. अगर आप 10 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हैं तो 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट होना चाहिए आपको. अगर आप 1000 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं तो 1500 का मिनिमम प्रॉफिट ट्रेड में होना चाहिए. द आइडिया इज वेरी सिंपल. अगर ट्रेड में नुकसान हो रहा है, नुकसान कम होना चाहिए. प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए. सो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:1.5. हायर द बेटर. ठीक है, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, बट ऑन मिनिमम साइड इट शुड बी 1:1.5. नाउ दिस इज वेरी जनरल स्टेटमेंट. ओके, देयर इज नो थंब रूल की 1:1.5 होना ही चाहिए. देखिए, अगर आपका सेटअप का विन रेट काफी अच्छा है, यू हैव अ ट्रेडिंग सेटअप विद 70% विन रेट और अबव 70%, you can even trade with 1:1 risk reward ratio. आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं इफ विन रेट इज वेरी गुड. अगर विन रेट 50% है, 50% के नीचे है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा. नाउ थर्ड रूल सेज डिटरमाइन पोजीशन साइज. ओके, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन फ्यू स्लाइड्स अहेड. इसको हम डिटेल में समझेंगे पोजीशन साइज को. एट दिस स्टेज यू जस्ट अंडरस्टैंड पोजीशन साइज मींस नंबर ऑफ शेयर्स वी कैन बाय और सेल इन ट्रेड. देखिए, एज अ ट्रेडर जो भी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको कितने शेयर्स में काम करना चाहिए, उसको हम कहते हैं पोजीशन साइज. सो दिस वी विल अंडरस्टैंड इन सम टाइम. काफी डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आई होप गाइस दीज 3 रूल्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ डू लेट मी नो इन चैट बॉक्स, आर यू गाइस फॉलोइंग दीज 3 रूल्स? क्या आप ये तीनों रूल्स फॉलो करते हो व्हाइल टेकिंग ट्रेड? ओके, टाइप इन चैट बॉक्स yes or no. Let me see how many of you are following these 3 rules. Okay, I can see a fair percentage of people saying no. Right. So guys, this is extremely important. आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, देखिए रूल्स को फॉलो करना काफी जरूरी है. देन ओनली यू कैन बिकम अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन लॉन्ग रन. ओके, जो लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओके, मेक श्योर फ्रॉम टुमारो और व्हेनेवर यू टेक यू नेक्स्ट ट्रेड, मे बी फ्रॉम मंडे, ओके, मेक श्योर यू फॉलो ओके दीस 3 रूल्स. Now, when you say risk reward ratio, are you देखिए, referring risk to reward ratio means profit to loss ratio. Okay, it should be minimum 1:1.5. This means if I'm taking a risk of 1 point in trade, my profit should be minimum 1.5. Okay, 1.5 point. If I'm taking a risk of let's say 10 points, तो आप 10 points को multiply कीजिए 1.5 के साथ, तो minimum profit 15 points का होना चाहिए. Okay, so this is the meaning of 1:1.5 profit to loss ratio. Okay, very good. Now guys, again we will conduct one small quiz to check your understanding level on this concept. Okay, rule number 2, profit to loss ratio. So 2 trades are given to you. इनमें से which trade you will prefer? ठीक है, that you need to answer. Yeah, मैंने poll launch कर दिया है and 2 examples दिए हुए हैं मेरे, example 1 और 2. 1 में entry level 200 है, target 220 and stop loss 190 है. Similarly, example number 2 में target 210 है. तो based on the rules जो भी मनीष सर ने पढ़ाए हैं, you have to tell which of the above trades will you prefer. Okay, I'll also be solving this question. I'm also a beginner, so I'll also be solving. I'll give you 2 minutes and then we'll move on with the class again. Okay. Okay. I'll be ending the poll in the next 5 seconds, guys. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Sir, 71% people say that example 1 will be chosen. Right, example 1 is correct because we are getting some good risk reward ratio in example 1. देखिए, हम लोग एंट्री कहां पर कर रहे हैं? 200 पे. Where is my stop loss? 190. So risk कितना है यहाँ पर? 10 points का risk. But look at the target. Target I can see it is 220. So the reward is 20 points.
So risk reward is 10 is to 20. 10 is to 20 is like 1 is to 2. Now see in example 2, entry 200, stop loss 190. So risk is still 10 points, but look at the target. Target is 210. So reward be 10 points ka hai. So risk reward is 10 is to 10. 10 is to 10 is like 1 is to 1. So therefore we should go for example 1 क्योंकि यहाँ पर अच्छा आपको risk reward मिल रहा है. Okay. So now guys we are starting with intraday trading strategy. देखिए यहाँ तक जो चीजें हमने कवर की काफी बेसिक्स थी. At the same time काफी इंपॉर्टेंट चीजें. Now we are going to start with advanced concept. हम लोग intraday trading strategy सीखने जा रहे हैं and this is one of the simple okay intraday trading strategy that we will discuss and it is based on a concept called gaps. ठीक है, ये gap के ऊपर based है. Now very first quiz, okay, very first question to all of you. I want to know from you guys why price open with gap up. आपने भी देखा होगा कभी कभार price gap के साथ खुलता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? Is this because of some positive news? Or is this because of some positive sentiments? Or it can be both. What do you think? ठीक है, जो भी आपको पता है, you can answer in quiz, answer in poll. I can see a lot of people saying both A and B. Wait, right? It should be both A and B. So sometimes we have a positive news. Okay, stock related positive news मिलती है. Or in morning we have some positive sentiments. Okay, Asian markets are up, SGX Nifty is up. So you may see, gap up opening. So yes, so price open with a gap up because of some positive news and because of some positive sentiments. So what gaps are? Here you can see. So gap happen when there is no overlap between last candle of day one and first candle of day. तो इसको हम लोग example के साथ समझेंगे. Here you can quickly see the slide of gap up and यहाँ पर आप देखिए right में we have a slide of gap down opening. Okay, now under gap up opening, okay, हम लोग gap up के ऊपर focus करेंगे because today's setup is based on gap up. So under gap up opening, we have two types of gap up opening. एक होता है partial gap up opening. So what is partial gap up opening? यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं. See, partial gap up opening means opening above previous day close but below previous day high. अगर प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो रहा है बट पिछले दिन के हाई के नीचे ओपन हो रहा है, तो उससे हम पार्शियल गैप अप ओपनिंग कहते हैं. ओके, हियर यू कैन सी द एग्जांपल. ओके, सो दिस इज द OHLC फॉर मंडे. ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. OHLC मींस ओपन हाई लो क्लोज. सो ऑन मंडे प्राइस ओपन एट 100. आफ्टर ओपनिंग एट 100 इट वेंट डाउन टिल 97. ओके, इट मेड अ डे हाई 110 एंड फाइनली वो क्लोज हुआ 105 पे. नाउ सी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड ऑन ट्यूसडे. We got opening at 108. Now can you see this 108 is above 105? इसको आप पिछले दिन के क्लोज से कंपेयर कीजिए. 108 is above 105 but below 110. So this is called as partial gap up opening. Okay, why this is called as a gap up? Because no trade happened between 105 and 108. पिछले दिन 105 पे बंद हुआ था, नेक्स्ट डे 108 पे खुला. So this is known as partial gap up. Now next is full gap up. Okay, here you can see full gap up. What is full gap up? Opening above previous day high is known as full gap up. So here is the example. On Tuesday what happened? Price directly opened at 113. What was previous day high? You can see previous day high was 110. अब next day पे कहां पर open हुआ? 113 पे open हुआ. It opened above PDH. So this type of gap up is known as full gap up opening. So are you guys clear with these two concepts? Okay, type yes or no. Okay, if you are clear, just type clear in chat box. आप clear type कीजिए so that we can move ahead. Okay, this is very simple concept. Partial gap up opening, full gap up opening. I think सबको आ गया होगा समझ में, क्योंकि मुझे भी आ गया है समझ में. मतलब I've also heard about this for the first time. Great. Now guys, which is more strong? ये partial gap up, full gap up जो हमने सीखा, आपको क्या लग रहा है? कौन सा सबसे ज्यादा strong है according to you? Partial gap up opening is strong or full gap up opening is more strong? What you feel? 10 seconds, guys, and then I'll end the poll. You have to tell which according to you is a more strong gap up, partial or full? When I am thinking about full gap up, right, sir? Right. Full gap up is more strong because प्राइस डायरेक्टली ओपन आउटसाइड प्रीवियस डे रेंज. पिछले दिन के रेंज के बाहर प्राइस ओपन हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई विल से यस, फुल गैप अप इज मोर स्ट्रांग कंपेयर टू पार्शियल गैप अप. नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी आपको गैप अप ओपनिंग दिखता है, सो व्हाट फर्स्ट थॉट कम इनटू योर माइंड?
आप लॉन्ग ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं गैप अप वाले दिन, या आप शॉर्ट ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं? What first thought come into your mind when you see full gap up opening? You will go for long trade or you will go for short trade? So can you tell me what do we mean by long trade and short trade? Yeah, long trade means आप buy करना prefer करेंगे अगर full gap up के साथ price open हुई है, do you prefer to buy or do you prefer to sell? अच्छा, short means sell. Right, short means okay. sell. Then right, so we have almost 50-50, very close to 50-50. Yeah. So some traders prefer to take buy trade, some traders prefer to go for a short trade. So today what we will do, today we will learn how to take short trade when you see price open with full gap up. अगर full gap up opening आपको दिख रहा है किसी भी स्टॉक में, okay, today I will teach you how you can take a short trade. आप short trade लेके कैसे कमा सकते हैं, that we are going to discuss. And this is one of the very simple setup, okay, how to take short trade after full gap up opening, that we will learn. Okay, so these are the system rules, but I will directly try to explain you with the help of example on graph. ठीक है, ग्राफ के साथ हम लोग डायरेक्टली समझते हैं. See, this is the price graph of Voltas. Here you can see. Okay, this is Voltas price graph. Time frame देखिए आपको क्या time frame follow करना है. You need to follow 5 minutes time frame. Okay, this is 28th April. Okay, this is the trading session of 28th April. Now, can you tell me what was the day high? What was the day high of Voltas? Voltas ने कल day high क्या बनाया? You can check the prices from extreme right. Okay, you can give me one rough level. आप एक rough level भी मुझे बता सकते हैं. You can type in chat box. What was the day high in Voltas on 28th April? Okay, 28th April को what was the day high? ठीक है, ग्राफ को आप ध्यान से देखिए and you can let me know approx levels. Okay, see, last candle made day high. Can you see this last candle made day high? Yes, no? दिन की आखिरी कैंडल ने डे हाई बनाया था वोल्टास में yesterday. Okay, 1294. You can see 1294 is the day high. Okay, 28th April. Now today 29th April. You can see. Can you see first candle? आपको first candle दिख रही है? Look at the first candle. Okay, what was the opening price? What was the opening price in today's first candle? Okay, you can read OHLC from top. यहां से आप read कर सकते हैं. See, yesterday day high was 1294. Look at the today's opening. What was today's opening? You can type in chat box. Today's opening is 1299. So this is partial gap up or full gap up? What do you think? ये partial gap up है कि full gap up है? Okay, type in chat box. Yesterday high 1294. Today open 1299. Right? This is full gap up opening because price directly पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुआ. Now look at the first candle. Okay, first candle को आप ध्यान से देखिए. See, as a trader, you should always learn how to read first candle. दिन की पहली candle आपको read करनी आनी चाहिए because at times first candle gives you a very good information. देखिए first candle का open high मुझे same दिख रहा है. First candle is bearish without upper shadow. अगर candle bearish है, upper shadow नहीं है, okay, this means we have open equal to high formation. अगर full gap up के बाद किसी भी स्टॉक में आपको open equal to high formation दिख रहा है, okay, this indicates sellers are active. Okay, sellers are very aggressive. That's why they are not allowing price to cross opening price. वो प्राइस को ओपनिंग से ऊपर जाने नहीं दे रहे. Though we got full gap up, उसके बाद भी आप देखिए sellers are active, not buyers are active. And see what happened in first candle. First candle में देखिए क्या हुआ. Price break first previous day high. पिछले दिन के हाई को ब्रेक कर दिया प्राइस ने. So this clearly indicates sellers are active. So what we can do, we can go for a short trade. Okay, in first candle only you can see price came down below previous day high. 1294 के नीचे आ गया price. So now we can take short trade. Okay, so what are the conditions to take short trade? Here you can read. So time frame will be 5 minutes. We want 5 minutes time frame. On 5 minutes time frame, okay, what we need to look, opening should be above PDH, means we want full gap up opening, and I want open equal to high in first candle. Okay, जो दिन की पहली कैंडल होगी उसका ओपन हाई सेम होना चाहिए.
If you are getting these two criteria, if you are getting these two conditions, okay, you can take short trade in those stocks. आप कैसे short trade लेंगे? फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट कीजिए, फर्स्ट कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है, एंड व्हाट विल बी द टारगेट, फर्स्ट कैंडल की जो भी रेंज होगी दैट विल बी द टारगेट. Okay, now we will discuss these points on graph. So again, I will open to voltas. Okay, so what is the first candle high, guys? You can type in chat box. What is the high? What is the low? ठीक है, high type कीजिए, low type कीजिए. First candle high, first candle low. Okay, type in chat box. Okay, what is first candle high and first candle low? दोनों type कीजिए. 1294. No, 1294 is not the high. You can look at the graph once again. 1299 is the high. Okay, you can read OHLC from top. आप top से read कीजिए and you can mention exact levels. 1299 high, and what is the low? 1285 is the low. Okay, 1299 is the high, 1285 is the low. So what is the range? Range क्या हुआ? Range is 14 points. High minus low. Okay, range is how many points? 14 points. 14. So अभी आपको शॉर्ट ट्रेड कैसे लेना है? हाउ यू विल टेक शॉर्ट ट्रेड? 1285 के नीचे आप सेल कीजिए उसको. ओके, गो शॉर्ट बिलो फर्स्ट कैंडल लो विच इज 1285. ओके, सो गो शॉर्ट बिलो 1285. नाउ व्हाट विल बी द टारगेट, व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस विल बी 1299, and what will be the target? Target will be 14 points on downside. So 1285 minus 14. Okay, 1271 will be your target. So is this clear? आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट तीनों चीजें क्लियर है? ओके, टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर. वी आर टेकिंग शॉर्ट ट्रेड बिलो फर्स्ट कैंडल लो. फर्स्ट कैंडल हाई विल बी माय स्टॉप लॉस, रेंज विल बी द टारगेट. ओके, क्या क्लियर नहीं है वो भी मेंशन कीजिए. ओके, यू कैन मेंशन व्हिच पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट क्लियर. ओके, व्हाट इज नॉट क्लियर यू कैन मेंशन सो दैट आई कैन रिपीट फॉर यू. फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेल करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है, एंड टारगेट विल बी फर्स्ट कैंडल का रेंज. आपको रेंज कैलकुलेट करनी है फर्स्ट कैंडल की. किसी भी कैंडल की रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाई माइनस लो. ओके, कैंडल हाई माइनस कैंडल लो. सो कैंडल हाई 1299, कैंडल लो 1285. So what is the range? Yes, range of first candle. So range is 14 points, right? Range is 14 points. So my target will be 14 points on downside. अगर 1285 break हुआ, so I will expect, price will go down 14 points, 14 points नीचे जाएगा. अगर 1285 break हुआ, okay, we can expect यहाँ से price 14 points नीचे जाएगा. Then what will be the target? Okay, what will be the target? अगर 1285 ब्रेक हुआ एंड इट इज एक्सपेक्टेड 14 पॉइंट्स नीचे जाएगा, तो बताइए टारगेट क्या होगा? 1271. परफेक्ट. ओके, नाउ आई होप इट इज क्लियर हाउ टू टेक एंट्री, हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस एंड व्हाट शुड बी द टारगेट. ओके, सेटअप इज वेरी सिंपल, काफी सिंपल सेटअप है. आप फुल गैप अप ओपनिंग फाइंड कीजिए, कौन सा स्टॉक फुल गैप अप के साथ ओपन हुआ है, एंड चेक कीजिए इफ यू हैव ओपन इक्वल टू हाई. अगर ये आपको कंडीशन मिल रही है ओपन इक्वल टू हाई, go short below first candle low, first candle high stop loss, and target will be range of first candle. See, risk reward 1:1.5, it was general statement I told you. If setup win rate is very good, अगर accuracy काफी अच्छी है setup की, तो आप 1:1 के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं. Okay, not a problem. Okay, so you can trade this setup with 1:1 risk reward ratio. Yes, it can work in Nifty, Bank Nifty में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो. If you see open equal to high, okay, full gap up opening, open equal to high, entry will be below first candle low. Okay, entry will be below first candle low. So you can trade this setup in index, you can trade in stocks. So this is the very recent example. Okay, आज का ये example है ये Voltas. You can see and see what happened today after first candle. Okay, it hit the target. Okay, gap up opening, open equal to high, and you can see a very quick fall. So this is the setup. Trading start at 9:15. Most of the time you will get trade before 9:30. Before 9:30 you will be in the trade, and before 10 o'clock, okay, you will be out from the trade. So this is one of the very simple setup, and you get some good trades, okay, using this setup. Now how to select stocks? Stocks हम कैसे select करेंगे? That I will show you. Okay, we can create a scanner. Okay, हम लोग scanner
क्रिएट करेंगे चार्टिंग वेबसाइट पे. आई विल शो यू हाउ वी कैन क्रिएट अ स्कैनर फॉर दिस स्ट्रैटेजी. ओके, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. ओके, आई विल चेंज द एग्जांपल. अभी हम लोग एग्जांपल थोड़ा चेंज कर लेते हैं. लेट्स सी इफ यू कैन नाउ. सन फार्मा. ओके, दिस इज सन फार्मा. So tell me how you will take trade. आप trade कैसे लेंगे? First of all, try to find out the setup. आप setup ढूंढिए. On which date can you see the setup? You can check the date at bottom. आप bottom पे date check कर सकते हो. 16th, 17th. On which date can you see the setup? आपको कौन से date पे setup दिख रहा है? 16. Arindam saying 16. Perfect. So here you can see this is 16th. Okay, this is full gap up with open equal to high. Now tell me entry, target, stop loss. ठीक है, आप बताइए. What, where you will take entry, where you will keep stop loss, and what will be the target? Okay, where you will keep entry, where you will take entry, where you will keep stop loss, and what will be the target? Perfect. Entry will be below 773. Okay, 773 के नीचे entry. 784 आप stop loss को round off कीजिए. You can keep stop loss 783.85, 784 कर दीजिए. Now what will be the target? Target is approx 10 points, right? 10 points का target दिख रहा है. Range is approx 10 points. Yes, 763 will be the target. Now one important point which I like to give you. Okay, note down. You can write down somewhere. Do not wait for dot target. आप dot target के लिए wait मत कीजिए. Because see, stock market is not an exact science. कि अगर 773 टूटा तो वो 10 पॉइंट्स नीचे आएगा. You know, sometimes what will happen, price will come very close to the target and you will miss to book profit by just few points. Now type in chat box कि आप में से कितने जनों के साथ ऐसा हुआ है? प्राइस आपके टारगेट के काफी क्लोज आ गया and it took U-turn. Have you experienced this thing? Okay, type in chat box. बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है सर, बहुत सारे लोगों के साथ. So that's why never wait for dot target. So here I like to give you one 80% rule. ठीक है, इसको मैं कहता हूँ 80% rule. Now what is 80% rule? 80% rule means अगर आपको टारगेट का 80% भी मिल रहा है, okay, you can book the profit, close the trade, get out from the trade. Okay, do not wait for dot target. So let's say my target is 10 points. What will be the 80% of 10 points? 10 points का 80% कितना होगा? 8 points. अगर आपको 8 points भी दिख रहा है, you can book profit and close the trade. Okay, do not wait for dot 10 points. Okay, sometimes price will fall 9 points, 9.5 points, and again it will take you. Okay, so follow this 80% rule, you will be good enough. Now see, this is IGL. Okay, again here you can see a small gap up opening with open equal to high. ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आप शॉर्ट ट्रेड लीजिए. फर्स्ट कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस रखिए. दिस इज द परफेक्ट स्टॉप लॉस बिकॉज ओपन इक्वल टू हाई मींस सेलर्स आर एक्टिव. जब तक प्राइस ओपन इक्वल टू हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप ट्रेड में बने रहिए. ओके, गो शॉर्ट बिलो फर्स्ट कैंडल लो एंड कीप स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल हाई. ओके, रेंज विल बी द टारगेट एंड हियर यू कैन सी. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज गैप अप फेल्ड? इसको हम गैप अप फेल्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट डू ओपन अबव गैप अप. ओके, प्रीवियस डे हाई के ऊपर भले ये ओपन हुआ, बट देखिए प्राइस ने सस्टेन नहीं किया. इन फर्स्ट कैंडल ओनली इट ब्रेक प्रीवियस डे हाई. दिन की पहली कैंडल में ही प्राइस वापस प्रीवियस डे के हाई के नीचे आ गया. सो दैट्स व्हाई यू नो दिस इज कॉल्ड एज गैप अप फेल्ड एंड वी कैन गो शॉर्ट, ओके, ऑन गैप अप फेल्ड. So here again very recent example, Bandhan Bank. Here you can see the dates. This was 13th April. Okay, you can see this was full gap up. Okay, go short below first candle low because we have open equal to high formation also. And throughout the day, slowly and gradually, you can see prices coming down. Okay, now we will move ahead. I hope this setup is very clear. कैसे entry लेना है? What should be the stop loss and target? Okay, now we will discuss about risk management. Now this is very important. Okay, when it comes to trading, okay, according to me, risk management काफी important है. Now, do let me know, guys, what you think. A profitable trading is what? A profitable trading is 20% strategy, 80% risk management, or 80% strategy, 20% risk management. What do you think? A profitable trading is 20% strategy, 80% risk management, या फिर 80% strategy, 20% risk management. क्या लगता है आपको?
अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट काफी अच्छा है, you will make profit, or you feel risk management is also important. Okay, according to me, second one. Okay, first one, 20% strategy, 80% risk management. Okay, according to me, a successful trading, a profitable trading is 20% strategy, 80% risk management. Why so? See, because once we are in the trade, अगर एक बार आप ट्रेड में चले गए, whether it will hit profit, it will hit target or it will hit stop loss, we do not know. Okay, एक बार हम ट्रेड में एंटर हो गए, क्या वो ट्रेड आपको टारगेट देके जाएगा, क्या ट्रेड आपको स्टॉप लॉस देके जाएगा? नो वन नोस, किसी को नहीं पता होता है. थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड. ओके, वंस वी आर इन द ट्रेड, बट बिफोर एंटरिंग इन द ट्रेड, ओके, बिफोर एंटरिंग इन द ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट इज इन अवर हैंड. वी कैन डिसाइड व्हाट इफ ट्रेड इज हिटिंग माय स्टॉप लॉस. अगर ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो मुझे कितना नुकसान उठाना है. ओके, हाउ मच आई एम विलिंग टू लूज. ओके, दैट आई कैन डिसाइड. So this is called as risk management. Now here you can see this one very important table. Okay, this is called as loss recovery table. Okay, on left side you can see percentage of loss of capital. अगर आपने 10% कैपिटल गवा दिया ट्रेडिंग में, सो परसेंटेज गेन आपको 11% अर्न करना पड़ेगा टू रिकवर योर 10% लॉस कैपिटल. अगर आपने 20% लॉस किया अपना कैपिटल, टू रिकवर दिस कैपिटल यू नीड टू गेन 25%, you need to make 25%. अगर आपने 50% गवा दिया अपना कैपिटल, now you need to make 100% gain, and after that ये और खराब होते जाएगा. So that's why risk management is very very important. So successful trading is, I will say, 20% strategy, 80% risk management. So that's why this concept position size makes extremely important यहाँ पर. What is position size? Here you can see position sizing means how many shares we can buy, okay, based on our risk taking capacity. As a trader, जो भी आपकी risk taking capacity है, उस हिसाब से आपको कितने shares में काम करना चाहिए. This is all about position sizing. So 3 steps you can see. Step number 1, what you need to do? First, you need to calculate trade risk. जो भी आप trade open कर रहे हैं, आप पहले risk पता कीजिए. So how we will calculate trade risk? Entry minus stop loss. So again, I will go back to Voltas example. Okay, if you remember, हमने क्या discuss किया in Voltas? What we discussed? Okay, we are taking entry at 1285. My stop loss is 1299. So how many points risk is involved in this trade? Okay, type in chat box. हम entry कहां पर ले रहे हैं? 1285 के नीचे 1299 का हम stop loss ले रहे हैं. So कितने points का risk है? Right, 14 points का risk है. Perfect. 14 points risk we have in this trade. तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल. ओके, आपको ये डिसाइड करना है ट्रेड रिस्क कितना है इसमें. नाउ सेकंड स्टेप इज यू नीड टू डिसाइड अकाउंट रिस्क. ओके, अकाउंट रिस्क शुड बी मैक्सिमम 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल. अगर ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, मेक श्योर आपको 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए. 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल. लेट्स से योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 1 लाख. व्हाट विल बी द 2% ऑफ 1 लाख? इट विल बी 2000. तो अगर ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ओके, मेक श्योर आपको 2000 से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए. इफ योर ट्रेडिंग कैपिटल इज वेरी स्मॉल, देन यू कैन डिसाइड मैन्युअली हाउ मच लॉस यू आर विलिंग टू टेक. 500 रुपीज, 750 रुपीज, 1000 रुपीज. ओके, डिसाइड वन स्टैंडर्ड अमाउंट एंड उसको ही आप फॉलो कीजिए. ओके, सो मेक श्योर इट शुड बी मैक्सिमम 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल. ओके, मैक्सिमम. आप 1% से भी स्टार्ट कर सकते हैं. 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ स्टेप 3 में आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क. नाउ टेक फॉर एग्जांपल, ओके, इन वोल्टास लेट्स से आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 14 पॉइंट्स एंड माय अकाउंट रिस्क इज 1400. अगर ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेट्स से प्राइस वापस ऊपर चली गई एंड हिट माय स्टॉप लॉस, आई डू नॉट वांट मोर देन 1400 रुपीस लॉस. मुझे 1400 से ज्यादा नुकसान नहीं चाहिए. So tell me how many shares I should buy. Okay, my account risk is 1400 and my trade risk is 14 points, 14. तो मुझे कितने शेयर्स में काम करना चाहिए? If I am taking a risk of 1400, 1400, okay, I am taking a risk of 14 points. How many shares I should buy? Right, we should go for 100 shares.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल रिक्वायर्ड. आपको कितना कैपिटल चाहिए? 100 शेयर्स अगर आपको सेल करने, इफ यू वांट टू सेल 100 शेयर्स इन इंट्राडे, हाउ मच कैपिटल यू नीड? लेट्स कैलकुलेट. सी आई विल गो शॉर्ट 1285. ओके, 1285 पे I will go short. Total how many shares I will sell? 100. So how much will be the capital I need? Please calculate. 1285 into 100. Okay, do this calculation. एक शेयर को हम लोग सेल करेंगे 1285 पे, right? How many shares we will sell? 100 shares. 1,28,500. But remember, starting मैंने क्या बताया आपको? You will get leverage 5 times. In intraday, broker will give you 5 times leverage. So 1,28,500 divided by 5. Okay, do this calculation. 1,28,500. Okay, divide by 5. How much capital we need? Because we also get 5 times leverage. 25,700. Perfect. So we need, 25,700 to short 100 shares in intraday of Voltas. So this is how you can calculate, okay, based on your risk taking capacity. आपको कितने शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए एंड कितना कैपिटल आपको लगेगा. सो वाज दिस यूजफुल गाइस? जो भी मैंने आपको बताया, डज दिस मेक सेंस? ओके, टाइप इन चैट बॉक्स. इज दिस क्लियर? Okay, I can see people saying yes, and even मेरे को भी समझ में आ गया, and I think everyone is saying yes only. कोई है जिसको नहीं समझ में आया, they can let us know in the chat. Up till then, we'll move on to the question. Yes. Okay. Okay. Just give me a second. I'll launch the poll. Okay. Now the question is, how many shares will you buy in the following trade considering 2% account risk and a total capital of rupees 1 lakh? ठीक है. Entry, stop loss और target दिया हुआ है हमें. You have to tell how many shares will you buy. You guys have 30 seconds, and after that I'll end the poll. Okay. I'll be ending the poll in the next 10 seconds, guys. Now more than 100 people here and only 55 have answered. सब लोग आंसर कर दो जल्दी जल्दी से. I just want to know कि सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि नहीं आया. An easy question, मैंने भी समझ लिया है. I've also got the answer. Okay, I'll be ending the poll now. So 42% people say 200 shares they'll be buying. Right, 200 is correct answer. Okay, 200 सही आंसर है. देखिए, पहले आपको ट्रेड रिस्क कैलकुलेट करना है. आप 100 पे एंट्री ले रहे, स्टॉप लॉस 90 रख रहे, 10 पॉइंट्स का रिस्क है इसमें. ओके, अकाउंट रिस्क आपको दिया हुआ है 2%, 1 लाख का, इट विल बी 2000. ओके, 2000 डिवाइड बाय 10. ओके, 2000 डिवाइड बाय 10, 200 शेयर्स. अगर आप 200 शेयर्स बाय कर रहे हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो योर मैक्सिमम लॉस विल बी 2000. So therefore we should go for 200 shares. Now let me share the scanner with you. ठीक है, ये जो सेटअप हमने सीखा, what was the name of setup? ये सेटअप का नाम क्या था गाइस? जो सेटअप अभी हमने डिस्कस किया इंट्राडे, गैप अप फेल्ड सेटअप. ठीक है, what we call this setup? Gap up failed. So how we will get stocks? Okay, some traders, उनको कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे स्टॉक्स हैं, हम किस स्टॉक में ट्रेड करें. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्कैनर क्रिएट करना होगा. सी, अगर मॉर्निंग में आज आपने ये स्कैनर रन किया होता इन टुडेज सेशन, हियर यू कैन सी वी हैव दीस 6 स्टॉक्स जिनमें ये सेटअप बना है, गैप अप फेल्ड सेटअप. ओके, ऑल दीस स्टॉक्स ओपन विद फुल गैप अप and they have open equal to high formation. So let's take for example SBI card. So are you guys interested in learning this setup? क्या आपको ये स्कैनर सीखना है? Are you guys interested in learning this scanner? Gap up failed scanner. Okay, people are saying yes, even I am interested, sir. Here you can see this is SBI. Can you see the setup? Do we have full gap up with open equal to high in SBI? अगर ये आपको पता है कंडीशन, व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना है अपने को. ओके, फर्स्ट कैंडल का हाई वी नीड टू कीप स्टॉप लॉस. एंड मेनी टाइम्स यू विल बी इन द ट्रेड बिफोर 9:30. ट्रेडिंग स्टार्ट 9:50. बिफोर 9:30 you will be in the trade, and maybe
before 10 a.m. okay, you will be out of the trade. Okay, very simple setup. Gap up with open equal to high, which indicates sellers are active. So how to create scanner? Okay, in some time we will cover. Okay, charting पे हम लोग scanner कैसे design कर सकते हैं, that we will learn in some time. Let me open another stock. Here you can see Mind, P, GSPL, Granules. Okay, all stock you can see quick. Okay, this is Mind P. Okay, this is first candle low. इसके नीचे आपको short करना है. Very simple. Okay, the trade got trigger in third candle, and here you can see the fall. Okay, this is GSPL. Okay, again the trade got trigger in third candle and it went up. Okay. Yes, Richa, now you can explain this. Okay, so I'll just summarize what we've learned up till now. Okay, मैं clear कर देती हूँ what we've learned and what we're going to learn in the coming slides. So we've learned about the basics of the candlestick, trading setup, and intraday trading strategy में कैसे entry, stop loss, target set करना ये भी सीख लिया है, and position sizing भी सीख लिया है, right? And coming ahead, we'll learn how to create scanner for the strategy जो अभी मनीष सर ने सिखाई है gaps के बारे में. We'll learn how to create a scanner on charting. आपको भी मतलब how you can create a scanner, ठीक है? And we'll also be learning the swing trading setup with the RSI, ठीक है? This is what we'll be learning in the next slide. Before we move on to the next slide, how many of you are interested in learning more? In learning more strategies like जो भी मनीष सर ने सिखाई है. Okay, there are many people who are interested. Okay, so before we move on, we'll take a 5-minute break and I'll tell you about the boot camp that we have with Manish sir. Okay, I'll just take 5 minutes, Manish sir, and then we'll move on with the next slides. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. So since this is only a 2-hour class, we cannot cover बहुत सारे topics नहीं cover कर पाते हैं in the in this 2-hour class. Time is very less. Okay. So what we are having is a boot camp, 7 days live session होते हैं that is starting from 2nd of May till 8th of May. जो regular live classes होती है 7 to 9 p.m. अब objective क्या है इस boot camp का? Now आज की क्लास में शुरू में मैंने objective बहुत clear कर दिया था कि आज हम 2 strategies सीखेंगे, ठीक है, जिनके बेसिस पे आप ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक strategy we are done with one strategy, right sir? Now in the boot camp we'll be learning 10 different profitable strategies जो मनीष सर की tried and tested है, उनकी back tested strategies हैं, ठीक है? And by the end of 7 days you'll be able to master your own trading setup, ठीक है? आपको पता होगा by the end of the boot camp you won't be needing any call or tip or recommendation. मनीष सर आपको जो strategies पढ़ाएंगे on the basis of those strategies you'll be able to take trades, ठीक है? आपको प्रैक्टिकली हर एक स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी सेटअप पढ़ाया जाएगा एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी, हाउ टू टेक अ ट्रेड, वो भी सिखाया जाएगा इन द बूट कैंप itself, ठीक है? मनीष सर एक बार सिलेबस बता दीजिए बूट कैंप का प्लीज. So guys, this is 7 days boot camp. Okay, you can see the day wise syllabus. See, we start this boot camp from 0 level. हम लोग चीजें काफी बेसिक से स्टार्ट करते हैं. Out of 7 days, the first 3 days, okay, we focus on basics. And from day 4, what we do, we basically start learning intraday setups. तो basics में हम क्या cover करते हैं? Introduction to technical analysis, candle pattern, support, resistance, trend analysis. ये सब in depth cover किया जाता है in first 3 days. From day 4 we start intraday trading strategies. तो day 4 पे हमारा focus होता है stocks के ऊपर. हम stocks में intraday trading कैसे करें? Day 5 our focus is on Nifty, Bank Nifty. Nifty, Bank Nifty में options के साथ हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. डे 6 को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स डिस्कस करेंगे यूजिंग इंडिकेटर. सो हियर यू कैन सी द स्ट्रैटेजीज, ओके, फ्रॉम डे 1 टू डे 7. दीस ऑल स्ट्रैटेजीज व्हिच वी विल कवर इन बूट कैंप. ओके, यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनका विन रेट 70% है. ओके, दीस ऑल आर बैक टेस्टेड. हियर यू कैन सी स्ट्रैटेजी विद 80% विन रेट. सो दिस वी कवर ऑन डे 3 इन बूट कैंप. And on this side, you can see the strategies with 60% win rate. Yeah.
So this is the syllabus that we are going to cover in the boot camp. जैसे आज की स्ट्रैटेजी थी वैसे वी हैव मोर 10 मोर स्ट्रैटेजीज जिनकी एक्यूरेसीज भी मनीष सर ने बता दी हैं इन द स्लाइड कि 60%, 70% एंड 80% ऐसी एक्यूरेसीज वाली स्ट्रैटेजीज में व्हिच विल बी टीचिंग इन द बूट कैंप. ठीक है. Right. So today's strategy you can see gap up field. So this I taught you directly from my boot camp. Here you can see gap up field strategy. This we discussed today. Yeah. So rather than we'll be teaching another strategy apart from this strategy in the boot camp, right, sir? Yes. Yeah, we'll be covering master candle strategy in the boot camp thing. This was the syllabus. Now I'll tell you about the basic details about the boot camp, how everything will be working. Okay, so you'll be getting live sessions. Okay, you'll be getting recordings and PPTs of each and every session for lifetime access. ठीक है, तो हर एक सेशन की पीपीटी और रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको. यू विल बी एडेड टू अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप विद मनीष सर एंड जहां पे आप डायरेक्टली मनीष सर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर व्हाइल ट्रेडिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं यू कैन डायरेक्टली पिन हिम अप ऑन व्हाट्सएप एंड ही विल हेल्प यू आउट इन द ग्रुप इटसेल्फ. ठीक है. ऑल्सो आफ्टर द बूट कैंप एंड्स अगर आपको उसके बाद कोई डाउट्स आ रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मनीष सर आफ्टर दैट. Will be providing you with lifetime support. उसका कोई issue नहीं होगा. You can contact me or you can contact Manish sir directly and he'll be helping you out. ठीक है. Manish sir also shares his trading journal and post market analysis videos in the boot camp. Manish sir एक बार इसके बारे में बता दीजिए. Right. So you will get post market analysis videos. So market close at 3:30. What we do, we basically find out important levels to trade for next day in Nifty and Bank Nifty. So those levels will help you a lot. Okay, when you take trades next day. Okay, we also share one trading journal. In trading journal, what we do, we basically pick 2 stocks. उनको हम in-depth analysis करते हैं. Now the idea is not to give you the tip. The idea is जब भी आप कोई stock को analysis करते हैं तो क्या-क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. So that will be covered in trading journal. Yeah. So I've told you about the things we'll be covering in the boot camp. Okay. Now for the first, for when we come to the fees of the boot camp, this is a paid course. So the original cost of the boot camp is 5,000 rupees. But for the people, for the first 20 enrollments, you'll be getting an added benefit. You can enroll at a discounted price, 40% discounted price at just 2,999. Okay, you are not audible, Richard. Aap mute pe. Oh, really sorry. Till what point was I audible? Yeah, so this one, 2,999. After that, okay. You are on. So for the first 20 enrollments, you'll be getting an added benefit. Okay, 40% discount is only valid for the first 20 enrollments. I'll be confirming all the payments in the chat itself. Okay, जो भी interested है, they can enroll via the link that I've shared. डायरेक्टली नंबर पे भी आप पे कर सकते हैं यूजिंग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड ओनली फर्स्ट 20 एनरोलमेंट्स विल बी गेटिंग द एडेड बेनिफिट्स. एंड और क्या एडेड बेनिफिट्स है? फर्स्ट you'll be getting free trading ebooks worth ₹1,000, 2 free ebooks, and second thing you'll be getting a free VIP pass of a super alpha conference. अब super alpha conference क्या है? एक conference जहाँ पे there are many experts like Manish sir जो different चीजों के बारे में पढ़ाते हैं इन दिस कॉन्फ्रेंस. ठीक है. लाइक इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मल्टी बैगर, क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, एल्गो ट्रेडिंग, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है इन द कॉन्फ्रेंस. ठीक है. तो उसका पास इज वर्थ ₹2,000, बट वो चीज आपको वीआईपी पास इज गिवन फॉर फ्री फॉर द फर्स्ट 20 एनरोलमेंट्स. सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड you can enroll by the link that I've shared. जैसे ही 20 enrollments fill होती हैं वैसे ही वेबसाइट पे चेंज हो जाएगा. The price will shoot back to 5,000 rupees. ठीक है. It won't be valid after the first 20 enrollments fill in. So if you guys are interested, you can let me know in the chat. If you guys have any doubts, you can let me know in the chat. I'll be taking them up. But also, can I share my screen? I just wanted to share the feedback that we've had from our previous students. Okay, is my screen visible? Yes. Okay. Yeah. Secondly, I want to thank sir for doing a very good job by
See, I have attended more than 8 to 10 classes of different coaches. But ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कि मुझे ये क्लास में जो मिला है, जो कम दिनों में ज्यादा मिला है, और कम फीस में भी मुझे ज्यादा मिला है, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि उतना मुझे 8-10 क्लासेस में नहीं मिला है. So it's really worth and thumbs up to both of you. To both of you for conducting such a good class. It was very knowledgeable, and this is the first time I am attending such a lecture, but it was very good and all concepts were explained very nicely. So first of all, thank you so much for the whole 7-day sessions. And in this session, actually, presently I'm doing a job in some elevator industry. So this is the last month of our financial year actually. So December is the last. So whole month is so busy, but till some of parts I have attended some of lectures, but really it was fantastic. And whatever I learned from this strategy, some of them I have back tested and I got the results. Awesome. So I'm so happy. Whatever you have taught us, really it's fantastic. Okay. So this is the feedback that we've had over our previous boot camps. अगर आपको कोई भी doubts है, you can type it in the chat. मैं देख रही हूँ जैसे कि there are many people who are typing, I'm interested, and I want to enroll. So I've already shared the link in the chat again. You can enroll by the link that I've shared. And yes, Arvind, yes, obviously. Arvind is asking that I'm very new and do not have any idea about the stock trading and buying. So could you let me know if 7 days would be fine? Yes, Arvind, 7 days would be more than enough for you because you're a beginner. And we'll also be sharing for beginners. We have other things. We'll be giving you a free starter course of trading and of options and futures and options. Right, Manish, sir? Yes. So even if you are a beginner, even if you guys are beginner, okay, so what we will do, we will give you the pre-recorded course. आपको pre-recorded course मिल जाएगा. Okay, so here you can see the syllabus. So this is specially designed for beginners. मैंने देखा है जो beginners होते हैं उनको काफी दिक्कत होती है orders place करने में. We have so many types of order like limit order, market order. So we have explained in this course. So in lesson number 4, you will learn types of order and how you can place orders in zero down. Lesson 1, you will learn everything on trading, types of trading, terminologies, jargons related to trading. Second lesson में आप index के बारे में सीखेंगे, Sensex, Nifty, Bank Nifty, other sectoral indices. In lesson 3, you will learn everything on Demat account, T+2 settlement cycle, T+1 settlement cycle. In last lesson, you will learn on brokerage and other charges, how we can calculate. And in option starter kit, you will learn everything on options, concept of call option, put option, option moneyness, ITM, OTM, ATM, concept of premium, intrinsic value, time value. So everything will be discussed in option starter kit. Yes, so, yeah, I've shared the link in the chat. Arvind, we'll make sure that you get to understand each and every session. That won't be an issue from our end. Once you enroll, it's our responsibility कि आपको समझ में आए, ठीक है? So you don't have to worry about that. And Bhanu Prakash sir is saying any camps after 20th May. Sir, there are no bootcamp planned as of now. So what you can do is you can enroll in this batch. जब भी next bootcamp होगा, what we'll be providing you with is कि आप लोग क्या कर सकते हैं? You can enroll in this batch. And अगर if someone misses 2-3 classes consecutively in this bootcamp, we'll give you a free slot in the next bootcamp as well. So वो कोई issue नहीं है. That is what I'm saying कि once you enroll with us, you are a part of our community. ठीक है? तो it becomes our responsibility to provide the maximum value that we can. ठीक है? तो आप इसमें enroll कर लीजिए and we'll give you a free slot in the next bootcamp as well. अगर आपको कोई भी doubt है, you can drop in your number. Personally, text me your number and my team will contact you regarding the same. Also, I think we can move on with the session, Manish sir. Before we move on, just one more thing. All the people, you can enroll by the link that I've shared. Second, you can also pay using Google Pay, Phone Pay, or Paytm. And third, what you can do is if you want to opt for a EMI option, that's also available. You can use credit card while paying through the link. Or if you don't have a credit card,
you can type that in the chat and drop your number, and my team will contact you and regarding the EMI plan that I have. Okay, Ved, Arya, you can go ahead and ask your question. Also, we'll be providing you with one live trading session with Manish sir. जो भी enroll करते हैं, we'll be giving you a free live trading session with Manish sir. एक live trading session होगा जिसमें you get to learn कि कैसे Manish sir सोचते हैं while doing trading. ठीक है? You get to analyze how he thinks and उससे आपको कितना benefit होता है. ठीक है? I'll start confirming the payments, Tamazar. I'll just start confirming the payments. I'll take Ved Arya's doubt. How can possibly trade for 7 days? Ved Arya, I'm not really clear. Sir, do you get? Right. So, Mr. Vedar, see, it's in 7 days. What we will do, we will focus on the syllabus and all these strategies, okay, which we are going to teach you. Those are very simple strategy. The way today we have discussed gap up failed strategy, it was so simple. In the same way, we have, all other strategies also. So we will make sure, okay, whatever we are teaching in those 7 days, आपको वो समझ में आ रहा है. And we also give you the assignment. Okay, at the end of every class, you will get some homework, you will get some assignments. और एक assignment live market का भी रहता है. Okay, आपको trade actual में trade लेना होता है in live market, so that we can check कहाँ पर आप गलती वगैरह कर रहे हो. So do not worry on that front. Once you enroll, we will make sure, okay, you start, trading in those 7 days only. Okay. ठीक है, जिन्होंने Ved Arya is asking about, I want to know about options. Ved Arya, just drop your number. I'll contact you. My team will contact you regarding the options. Right, sir? Yes. Sure. I'll get in contact with you after the class ends. Okay. Options के बारे में जिनको भी doubts हैं, they can drop their number and write options in front of that, and I'll get in contact with you. ठीक है? After the class ends. I think, Manish, we can start with the second half of the class where we'll be learning how to create scanner using charting and the strategy using RSA, right? Yes. So now we will learn, okay, जो भी हमने strategy सीखी, gap up fail strategy, ठीक है, उसका scanner हम कैसे डिजाइन करें, okay, on charting website, so that we get the list of stocks जिनमें हम trade कर सकते हैं. So you can run scanner, okay, daily आपको ये scanner run करना होगा. At what time you will run scanner? 9:20, okay, after 5 minutes. Okay, trading start 9:15. We need to wait for first 5 minutes. At 9:20, you can run scanner. You will get the list of stocks जिनमें setup बना है. And before 9:30, okay, you will get a very good trade. Okay, so let's see now how to create a scanner. देखिए, अगर आपको scanner create करना है, you need to visit chartink.com. Okay, in address bar you can see the name of site. It is chartink.com. आप chartink.com पे जाइए, and here you can see at top create scan. Okay, click on create scan. देखिए, scanner आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपको सेटअप की कंडीशन पता होनी चाहिए. यू शुड नो द कंडीशन ऑफ सेटअप. तो आज जो हमने सेटअप सीखा, ओके, द सेटअप व्हिच वी हैव लर्नड, उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वी वांट फुल गैप अप ओपनिंग. मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें एक फुल गैप अप ओपनिंग हुई है. नाउ व्हाट इज फुल गैप अप ओपनिंग? फुल गैप अप ओपनिंग मींस ओपनिंग अबव प्रीवियस डे हाई. सो हियर यू कैन सी प्लस सिंबल, यहां पर आपको क्लिक करना है. ओके, आई वांट opening, okay, opening above means greater than, okay, greater than previous day high. Okay, यहाँ पर आपको high select करना है. Okay, and here you can see the latest high. latest पे आप क्लिक कीजिए. We want previous day high. Okay, we want not latest high but previous day high. So here you can read now opening greater than 1 day ago high. तो इसको आप कैसे रीड करेंगे? ओपनिंग अबव प्रीवियस डे हाई. एंड ओपनिंग किसका? फर्स्ट कैंडल का, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे फर्स्ट कैंडल का. देखिए यहां पर लेटेस्ट लिखा हुआ है. सो अगेन व्हाट वी विल डू, क्लिक ऑन लेटेस्ट. मुझे फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर चाहिए. ओके, फर्स्ट 5 मिनट्स, यहां पर 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम कर देंगे फर्स्ट कैंडल. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट कंडीशन. ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे first candle should have opened above previous day high. Is this condition clear to everyone? Okay, type in chat box if this is clear. Okay, this is the first condition we have given to this scanner.
Okay, this is the first condition we have given to this scanner. मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर है. Okay, opening greater than 1 day ago high. Okay, so time frame here you can see 5 minutes time frame, and this equal to 1. Okay, this equal to 1 means first candle on 5 minutes time frame. Now what was the second condition? If you remember, second condition क्या था? Open equal to high. Okay, open and high दोनों सेम होने चाहिए. So open, okay, open equals high. अब ये ओपन हाई दोनों बराबर होने चाहिए. अगेन फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. सो अगेन आई विल सिलेक्ट 5 मिनट्स हियर. ओके, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. एंड विच कैंडल वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर फर्स्ट कैंडल. ओके, वी आर लुकिंग फॉर फर्स्ट कैंडल. सो अगेन लेटेस्ट की जगह पर आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है. ओके, यू नीड टू सिलेक्ट टाइम फ्रेम विच इज 5 मिनट्स in our case. And which candle we are focusing? We are focusing on first candle. Okay, this scanner is ready now. Okay, these two conditions I have given. Now when you click on run scan, here you can see the option run scan. When you click on run scan, what scanner will do? Scanner will quickly check, okay, कौन से stocks ये दो conditions match कर रहे हैं, जिनमें full gap up opening भी है और जिनमें opening और high दोनों same भी है. So when you click on run scan, you will get the list of stocks. अगर ये setup किसी भी स्टॉक में बना है तो यहां पर आपको नाम दिख जाएगा. सो विच सेगमेंट यू विल स्कैन? ओके, हियर यू कैन सी एट द टॉप बाय डिफॉल्ट इट इज सिलेक्टेड कैश सेगमेंट. ओके, क्लिक ऑन कैश. आप कैश पे क्लिक कीजिए. आई विल एडवाइज आप फ्यूचर सेगमेंट स्कैन कीजिए. ओके, फ्यूचर्स सेगमेंट मींस स्कैनर विल स्कैन ऑल दोस स्टॉक्स व्हिच आर अवेलेबल इन एफएनओ. ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है स्कैनर्स को स्कैन करें. And then click on run scan, scroll down, and here you can see the list of stocks. So today we got 6 stocks जिनमें ये setup form हुआ, gap up failed. Okay, so daily you need to run this scanner. Okay, 9:20 after first 5 minutes. Trading start 9:15, 5 मिनट आपको वेट करना है. 9:20 को आपको ये स्कैनर रन करना है. Okay, you will get this. ठीक है, ये स्कैनर आपको मिल जाएगा. अगर आपने सीखा है तो नाउ यू ऑल्सो कैन डिजाइन ऑन योर ओन. आप खुद से भी स्कैनर डिजाइन कर सकते हैं. सो डू नॉट वरी ऑन स्टॉक सिलेक्शन. वन स्कैनर आपको इतने सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप ट्रेड ले सकते हैं. नाउ वंस यू क्रिएट दिस स्कैनर, एक बार ये आपका स्कैनर क्रिएट हो गया, आप सेव स्कैन कीजिए. ओके, सेव स्कैन आप कर सकते हैं. इफ यू हैव अ प्रीमियम वर्जन ऑफ चार्टिंग, अगर आपका प्रीमियम वर्जन है तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं. यू कैन डू द बैक टेस्टिंग. कौन से दिन पे पास्ट में, ठीक है, ये सेटअप फॉर्म हुआ है किन किन स्टॉक्स में, एंड यू कैन डू द बैक टेस्टिंग. ओके, हाउ दिस सेटअप इज डूइंग. सो क्लिक ऑन सेव स्कैन एंड यू कैन बुकमार्क. आप बुकमार्क कर दीजिए क्रोम ब्राउजर में, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, व्हेन मार्केट इज लाइव इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रन स्कैन. सो डू बुकमार्क एंड सेव स्कैनर इन योर क्रोम ब्राउजर. Okay, which stocks is the best? There is no criteria as such because in all stocks we have same setup. So you can choose. Okay, you can choose any 1 or 2 stock to trade. Manish sir, we have a doubt by Prabodh Gupta. Okay. How to pick a good stock to trade? Yeah, this is what I answered now again. So whichever stocks you can see in scanner. Okay, see all these stocks are good to trade because it means same setup बना है. In sub stocks में same setup बना है. So you can pick randomly any 1 or 2 stocks you can trade, and if you can trade in all stocks, आप सारे stocks में भी trade कर सकते हैं. But as a beginner I will advise आप 2 stocks में trade कीजिए. Okay, pick any 2 stocks randomly and trade. Okay, do not go beyond 2 stocks. If you are experienced, then maybe you can handle 3 to 4 or multiple positions. If you can handle, तो आप 3 से 4 stocks में भी trade कर सकते हैं. So usually you will not get so many stocks. आज आपने देखा होगा, if you have noticed today Nifty got gap up opening. If you noticed, आज Nifty में भी gap up opening था. So when market opened with gap up opening, so you will get so many stocks. Otherwise, the list of stock will be very narrow. Okay, daily you will get 1 to 2 stocks, not more than that.
Okay, so I hope this scanner part is very clear to all of you. Okay, type clear in chat box. आपको scanner आ गया समझ में कैसे डिजाइन करना है? It was very simple. Okay, so that we can move ahead. All FNO stocks are liquid. शिवम, ठीक है, ये स्कैनर को हमने कौन सा सेगमेंट रन किया? फ्यूचर्स. So all FNO stocks are liquid. If you So wish, I you would can. also, Yeah. before we move on, I would also like to convey that last 15 slots are left. All the interested students can enroll by the link I've shared. I'm also sharing the link again. And you can also pay via directly using Paytm, Google Pay or PhonePe. Ved Arya is asking about options trading. So drop your number. I think I already have a number. I will call you after the class ends and I'll tell you about the option trading we've done. Okay, now guys, you can also run Nifty 50 scan. If you wish, you can also scan Nifty 50 stocks. तो Nifty 50 के stocks में से, ठीक है, जिनमें भी ये सेटअप बना है, उन स्टॉक की आपको लिस्ट आ जाए. So first, I will advise go for futures, and then you can run Nifty 50 also if you wish. Second choice not clear. So again, second choice is very simple. The second condition is we want open, okay, open equal high. Okay, here you can see the first condition is open is equal to high, and second condition here you can see opening is more than previous day high. Okay, so this is about full gap up. Opening price पिछले दिन के हाई के ऊपर होना चाहिए, and first candle का open और high दोनों same होना चाहिए. So these are the two conditions we have given to this scanner. Okay, now we will move to swing trading setup. देखिए अभी हमने intraday trading setup सीखा. Now we will learn swing trading setup. Now again, swing trading setup is also very simple. Just like intraday trading setup, this is also a very simple setup and it works very well. Okay, so swing trading में हम लोग क्या करेंगे? What we will do? We will use indicator called RSI. Okay, हम लोग RSI indicator use करेंगे. Time frame we will keep daily time frame, and along with RSI I will also use 20 simple moving average. Okay, so for swing trading guys, what we are doing, we are using daily time frame. Okay, RSI indicator use कर रहे हैं, साथ में 20 simple moving average indicator भी use कर रहे हैं. Now let me again take you to the directly on the graph and explain you. So first I will change the setup. पहले मैं daily time frame पे आऊंगा for swing trading, and I will select a stock called, let's say, power grid. Power grid को पहले हम लोग select कर लेते हैं. Okay, so this is graph of power grid on daily time frame. Okay, now what we will do on daily time frame, what we will do, we will add RSI. हम लोग RSI indicator add करेंगे. Here you can see the indicators. यहाँ पर आपको indicators दिख रहा है टॉप पे, इस पे आप क्लिक कीजिए and search में आप टाइप कीजिए RSI. Now when you type RSI here you can read relative strength index. Okay, इसको आप क्लिक कीजिए and close this window. इसको आप close कीजिए. One small setting you need to do. एक छोटी setting आपको करनी होगी for RSI. So on left side, okay, on bottom left you can see this is the settings option. Okay, click here. इस पे आप क्लिक कीजिए. See RSI length आपको by default कितना दिख रहा है? 14. Instead of 14, what I personally do, I follow 13. Can someone tell me why we are using 13 instead of 14? What's so special about number 13? What's so special about number 13? Why we are using 13 instead of 14? Okay, do let me know if you know the logic behind this. Let me see. Okay, perfect. Kamazar is saying fib number. 13 is Fibonacci number. Perfect. Right, 13 is Fibonacci number, fib number. That's why instead of 14, we are doing this small change. Okay, we will use 13 RSI. Click on OK. Now guys, RSI is momentum indicator. I hope ये आपको पता होगा. This is very common indicator. Okay, भले आप trading में new हो, I hope आपने सुना होगा इस indicator के बारे में. So this is momentum indicator. RSI tells you about momentum. If price is moving up, if price is moving down, ठीक है, RSI से हम check कर सकते हैं. Price में momentum है या price में momentum नहीं है. Okay, that we can check from RSI. Now every indicator, every oscillator, आप RSI को एक type का oscillator भी कह सकते हैं. Every oscillator, you know, fluctuate in predefined range. Same is the case with RSI. You will always find RSI will give you value between 0 to 100. The formula, RSI का formula ऐसा बनाया गया है. It will never give you value below 0
it will never give you value above 100. The value will be always between 0 to 100. Now between 0 to 100, 60 level is extremely important. देखिए एक बार RSI ने 60 लेवल क्रॉस किया, once RSI क्रॉस 60 लेवल, very high chances प्राइस एक अच्छा मोमेंटम पिक कर सकता है. Now there is no 100% guarantee कि RSI ने 60 लेवल क्रॉस किया तो प्राइस एक अच्छा मोमेंटम पिक कर सकता है. No, there is no 100% guarantee. We can say there are very high chances once RSI cross 60 level on daily time frame, प्राइस एक बढ़िया मोमेंटम, प्राइस एक बढ़िया ट्रेंड पिक करने के चांसेस रखता है. Okay, now I will add 20 moving average. So again, I will go to indicators and here I will type moving average. Okay, here you can see moving average. इसको यहाँ पर हम लोग close कर देंगे. Again, one small setting we will do. Go to settings from top left. See, by default you will get 9 period moving average. ये जो length आपको दिख रहा है inside input, the length by default it will be 9. Instead of 9 आप क्या कीजिए, इसको 20 कीजिए. We want 20 simple moving average. इसको आप 20 कीजिए. Now this blue line which you can see, okay, this is 20 period moving average. ये जो blue line आपको दिख रहा है, okay, candles पे, this is 20 period moving average. Okay, now we will try to understand price action. ठीक है, पहले हम लोग price action समझने की कोशिश करते हैं. Okay, this is again a very simple setup. काफी अच्छे trades मिलेंगे इसके बेसिस पे भी आपको. See, now focus on this area. यहाँ पर आप focus कीजिए. This is month of February. Okay, on daily time frame, power grid. Okay, this is month of February. Here you can see price is trading below 20 moving average. अगर price 20 moving average के नीचे trade कर रहा है, this is the sign of strength or sign of weakness. Type in chat box. मुझे chat box में आप बताइए, अगर किसी भी stock में आपको दिखे price 20 moving average के नीचे दिख रहा है, नीचे trade कर रहा है, so is this a sign of strength or is this a sign of weakness? Okay, type in chat box. This is pretty logical question. ठीक है, I'm asking. अगर price 20 moving average के नीचे trade कर रहा है, this is sign of weakness or sign of strength, right? This is sign of weakness. Okay, now here you can see. Look at this candle. In this candle, price closed above 20 moving average. Okay, in this candle you can see price closed above 20 moving average. So what this means? This means प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है. ओके, दिस कैंडल इज शोइंग मी प्राइस इज ट्राइंग टू चेंज इट्स ट्रेंड. देखिए पहले 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, आज देखिए ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. नाउ कैन समवन रीड वैल्यू ऑफ आरएसआई? आप ये कैंडल में आरएसआई की वैल्यू रीड करेंगे फ्रॉम बॉटम लेफ्ट इन ब्लू कलर. कैन समवन रीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएसआई इन दिस कैंडल? Okay, you 60.25. I hope everyone can read. So RSI also turn above 60. RSI turn above 60 means sign of momentum. Price 20 moving average के ऊपर. At the same time, you can see we have RSI also above 60. And look at the candle. Can I say this is a strong bullish candle? Yes, no. You can type in chat box. क्या आपको ये strong candle दिख रहा है? By looking at this candle, can I say buyers are active? Can I say buyers are active? Right, so this is what we want. आपको एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है on daily time frame. The candle should be a very big bullish candle. Okay, जिसमें RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए. See, if RSI 60 के ऊपर है, by default, okay, price will be about 20 moving average. So just you need to make sure candle should be very strong. Strong candle होनी चाहिए. अगर small candle है, आप इसको इग्नोर कीजिए. Look at the next candle. If you are getting candle like this, इसको आप इग्नोर कीजिए. I want a big bullish candle, strong candle. Candle देखते ही मुझे लगे buyers are active. And वो candle में RSI should be 60 above. So this is alert candle. Okay, this is alert candle for me. Now how we will take trade? अभी इसमें हम लोग trade कैसे करेंगे? ये हमने alert candle ले लिया. इसके हाई के ऊपर आपको trade लेना है. Okay, go long. इसके हाई के ऊपर alert candle के हाई के ऊपर trade लीजिए. इसका लो हम stop loss रखेंगे. Okay, we will keep this same candle low stop loss. And what will be the target? Same range. Okay, range of this candle will be the target. Now, can someone read what is the high of this candle? ये candle का high आपको क्या दिख रहा है? Type in chat box. What is the high of this candle? You can check the information from top OHLC. Okay, ऊपर से आप check कीजिए information. And 210.5
2.25, ओके 210.25, इसके ऊपर आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 196। व्हाट इज द रेंज? प्लीज कैलकुलेट रेंज। व्हाट इज द रेंज? 14 points. So 14 points will be your target. So 210 plus 14, आपको ये जो रेंज है हाई में ऐड करना है। ओके 210 plus 14, so target will be 224. Okay, 224 will be the target. Perfect. Very simple setup. Okay, just try to understand the price action. Okay, again I will show you some more examples. Take our examples, we will see. Okay, now here we will see now. See, देखिए यहाँ पर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे दिख रहा है आपको। कैन यू सी प्राइस इज ट्रेडिंग? ओके, हियर यू कैन सी प्राइस इज ट्रेडिंग below 20 moving average. Look at this candle, a strong bullish candle above 20 moving average. RSI is also above 60, you can see. So this is alert candle. ये कैंडल के हाई के ऊपर आप ट्रेड लीजिए, इसी कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। रेंज मुझे दिख रहा है 5 पॉइंट्स। ओके, आई कैन सी द रेंज इज 5 पॉइंट्स, so that will be the target. Manish sir. Yeah. Okay, I just wanted everyone to know the last 9 slots are left out of the first 20, and after the slots fill in, the price will shoot back to 5,000 rupees. And all those who are interested in enrolling but are not enrolling because of some or the other issue, like any financial issues or any dates clashing, just fill in this feedback form. I've shared a form. All those who are interested but are not enrolling but cannot enroll at this moment, just fill in this feedback form and my team will get in contact with you later. They say some students are saying please hold my slot. Just fill in this form and my team will get in contact with you after the class ends. ठीक है? And also Anand sir की payment fail हुई थी, तो please if you're here sir, please try again using any UPI method or any other method so that we can hold a slot for you. Yeah. So Sunny sir is asking how to calculate range. देखिए आपको कैंडल का रेंज कैलकुलेट करना है। आप कैंडल का हाई नोट कीजिए, कैंडल का लो नोट कीजिए, हाई में से लो माइनस कीजिए। ओके, हाई माइनस लो, आपको रेंज मिल जाएगा। सो कैन यू सी एनी ट्रेड गाइस? यहाँ पर आपको कोई ट्रेड दिख रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी? कैन यू सी एनी ट्रेड इन पावर ग्रिड? ओके, टाइप इन चैट बॉक्स yes no. Can you see any trade in power grid in the month of February? Do we have any trade? Right here you can see the price is trading below, okay, below 20 moving average. Here you can see this is a very strong candle, 3rd February. ठीक है, ये alert candle है because this is strong candle and RSI is above 60. You can see the value of RSI, it is 64. ठीक है, इसके हाई के ऊपर आप बाय करेंगे, इसका लो आप स्टॉप लॉस रखेंगे। So what is the high? 141.95, low 131.50. So approx 10 points is the range, as I will say. So 10 points you can keep target. See, the trade got triggered on this day, and from here you can see it went up. Okay, let's change the stock. Okay, I will show you some few trades in BPC. Okay, again all recent trades we will see. See, this is the BPCL. यहाँ पर आप देखिए price was trading below 20 moving average. Okay, 20 moving average was working like resistance. Okay, it took resistance at 20, came down. Now here you can see price closed above 20 moving average. So this was the sign of weakness, and here you can see this was the indication. Price is trying to change its trend. Price अपना trend change कर रहा है. But look at the RSI. In this candle, I cannot see RSI above 60. So I will not trade. It just indication that price is trying to change the trend. पहली बार देखिए स्टॉक जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है. First time price closed above 20 moving average. But RSI is below 60. So I will wait for few days. Let RSI turn above 60. Now look at this candle. Is this a strong bullish candle with RSI above 60? Yes, no, you can type in chat box. Is this a strong bullish candle with RSI above 60? Right, इसके हाई के ऊपर आप बाय कीजिए, इसी का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है.
जो भी रेंज दिख रही है that will be your target. Okay, whatever range you can see that will be your target. So very simple setup. Okay, पहले प्राइस 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, फिर RSI 60 के ऊपर आ रहा है, and then you will get a very good trade. Your target will achieve, in 3 to 4 trading sessions. In some cases it may take 7 trading sessions, depend on stock to stock. ठीक है, किस स्टॉक में कैसा मोमेंटम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. Okay, Manish sir, can I? Okay, I just wanted to let everyone know कि जो लोग भी UPI से पे कर रहे हैं, just let me know in the chat once that you've paid through UPI so that I can map your payments and I'll contact you guys after the class ends. ठीक है, UPI के लिए I just need one message from your side. You've paid so that I can have a number that you guys have paid on UPI. ठीक है. I've also dropped my number. मैंने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया, तो all those who are interested they can also text me or call me on this number. ठीक है? Okay. Thank Now you. guys, we will discuss how many shares you will buy. आप कितने shares buy करेंगे आप बताइए मुझे. Very first thing what we need to do, okay, you need to calculate position sizing. Okay, कितने shares में आपको काम करना है, you need to calculate position sizing. So 3 steps हमने discuss किए थे. So position sizing will help you, okay, whether you are taking intraday trade or you are taking swing trade. चाहे आप intraday trading करें, swing trading करें, position sizing को आपको भूलना नहीं है, because position sizing is all about risk management, trade management. So look at the range of this candle. ये candle की range मुझे बताइए. Okay, now type in chat box what is the range of this candle. Okay, here I have a cursor on this candle and you can note down high and low, calculate the range. Okay, calculate the range. I hope everyone is doing this calculation. This is very important. Okay, approx 14 points is the range we can say, because 361.55 का low बना है, 375 का high बना है, approx 14 points is the range. Now let's say you want to take a risk of let's say 700. आपको 700 का risk लेना है in this stock. If this stock hit your stop loss, अगर यहां पर आपका stop loss hit हुआ तो 700 से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए. How many shares you will buy? Okay, do this calculation. 50 shares we will buy. Right? How much capital you need? Capital कितना लगेगा आपको? To buy one share, okay, price is 375. Total how many shares we are buying? We are buying 375 shares. Okay, in swing trading you will not get leverage. Okay, leverage concept was for intraday. Okay, so here you need full capital. Okay, price to buy one share 375 into 50, 18,750. So how you find both the setups? आपको दोनों setups कैसे लगे? You can share your feedback. Type in chat box how you find both the setups. Intraday setup सीखा हमने, swing trading setup सीखा. So can you guys trade on your own? क्या आप खुद से trade कर सकते हैं in live market with confidence? Can you start trading on these setups from Monday onwards? Okay, so in bootcamp also we are going to focus on simple setups. Okay, we are not doing any deep technical analysis. Very simple setups. All these setups are based on price action. Okay, once you know the price action, and price action works every time. ये setups काफी अच्छा काम कर रहे थे past में, आज की डेट में भी ये setup काफी अच्छा काम कर रहे हैं. Okay, price action आप सीखिए. Okay, in this bootcamp we will focus on price action. Now guys, any doubt? Okay, कोई भी doubt है related to setups which we have discussed or related to bootcamp? Okay, you can ask, we will answer. ओके, हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक्स. देखिए, स्टॉक्स आपको फाइंड करना है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, आपको सेटअप पता होना चाहिए. सेटअप के कंडीशंस आपको पता है, आप स्कैनर डिजाइन कीजिए, स्कैनर रन कीजिए मार्केट में, लाइव मार्केट में, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स. ओके, जल्दी सर, इफ यू आर इन लॉस ऑफ 40,000, सो यू नीड टू चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल. आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी. यू नीड टू एनालाइज ऑन योरसेल्फ, आप किस रीजन के वजह से लॉस मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे, या आपके पास कुछ अच्छे सेटअप्स नहीं है. Maybe you are not having some good setups, so you need to take out some time for yourself and try to find out the reason why you are in loss.
Okay, then you need to change your trading style. Hello, am I audible? Yes, Richa. Okay, actually I had some technical issue. Okay. So if you guys have any doubts, you can let us know in the chat. So Shyam sir is asking difference between SMA and EMA. Right, difference between SMA EMA, very simple. देखिए SMA में क्या होता है? In SMA we are giving equal weightage to each and every trading session. Whereas in EMA what we do, the more weightage is assigned to most recent trading session. जो recent trading session है, मतलब आप समझो आज का जो trading session है, उसको importance ज्यादा दिया जाता है, उसको हम weightage ज्यादा देते हैं. In simple moving average, we have equal weightage for all days. So this is the only difference between EMA and SMA. SMA assign equal weightage to all sessions. EMA assign more weightage to recent trading session. Okay, Simran is asking to explain position sizing once again. So I will quickly explain, okay, position sizing. To calculate position sizing, there are 3 steps. ठीक है, 3 steps हैं. अगर आपको position sizing calculate करना है, here you can see. Step number 1, what you need to do, आपको trade risk पता करनी है. आप जो भी trade ले रहे हैं, उसमें risk कितना है, that you need to find out. वो आप कैसे find करेंगे? Entry price minus stop loss. Entry price में से आप stop loss minus कीजिए, आपको risk पता चल जाएगी. After that, the second step is account risk. आपको account risk decide करना है. Okay, you need to make sure maximum, okay, maximum आपका account risk होना चाहिए 2% of your trading capital. अगर trade में नुकसान हो रहा है, अगर आपका trade में stop loss hit हो रहा है, please make sure you should not lose more than 2% of trading capital. अगर आपका trading capital 1 lakh है, 2% of 1 lakh will be 2000. So please make sure अगर trade में नुकसान हो रहा है, that loss should not be more than 2000. This is on maximum side. You can also start with 1%. This is thumb rule. Maximum it should be 2% of trading capital. But initially, if you are starting new, you can also start with 1% of trading capital. Okay, initially you should not take too much risk, because see here what we have seen. आप जितना ज्यादा लॉस लेंगे, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे, अगर लॉस होगा उतना ही आपको ज्यादा रिकवरी करनी पड़ेगी. सो एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यू कैन डिसाइड. एंड देन थर्ड स्टेप इज, यू कैन सी नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करने. सो हाउ यू विल कैलकुलेट? अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क. Account risk divided by trade risk. Okay, when you follow these 3 steps, you will get how many shares you should buy. Okay, are we done with the concept, Manish sir? Yes. Okay. If anyone has any doubts up till now regarding the bootcamp or regarding the session, they can let us know in the chat, or you can also raise your hands and we will unmute you guys now. This is the Q&A session. If you guys have any doubts, you can raise your hands or you can type your doubts. Vipul sir is asking account risk नहीं आया उन्हें समझ में. So account risk is like, Vipul sir, आप जब ट्रेड लेते हैं तो आप रिस्क कितना लेते हैं एक ट्रेड में? Okay, type in chat box. Vipul sir, whenever you take trade, how much risk you take? उसमें आप रिस्क कितना लेते हैं? 1000 रुपीज का रिस्क लेते हैं, 500 रुपीज का रिस्क लेते हैं, आप 2000 रुपीज का रिस्क लेते हैं. Okay, type in chat box. Whenever you take trade, how much risk you take? तो जो भी आप रिस्क लेते हैं, that is account risk. इसको ही आप account risk समझिए. Okay, Ved Arya has a doubt. You can unmute yourself. Ved? Yeah. Hello ma'am, I want to know about only option trading class. मैं केवल option trading class के बारे में पूछना चाहता हूँ कि option trading आप मेरे को कितने दिन में सिखा देंगे? I am not satisfied with the 7-day session. मुझे नहीं लगता कि 7 दिन में कुछ आ जाएगा. तो मुझे इससे ज्यादा का अगर सेशन है और कोई रेगुलर क्लास है तो प्लीज उसके बारे में मुझे बताइए. Manish sir, would you like to take this question? इनका आपको कांटेक्ट नंबर है ना, so you can contact with I have your contact number.
I'll call you after the class ends. I'll tell you about the options bootcamp that we have. I'll let you know about that. Okay. 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 Subhatra, you can please try to unmute. हेलो Yes. हाँ जी, हाँ जी. हाँ मैडम बोल रहे हैं आपको सिखा है ठीक है क्या कह रहे हैं सर? मैं बोल रहा है और जो आप जो सीख रहे हैं ना और सेटअप किसने देगा Sir, I'm not able to get your question. Can you please repeat yourself? हेलो हाँ जी सर. मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्शन फ्यूचर में काम में लगेगा तो वो भी सिखाना पड़ेगा Manish sir, are you able to get this question? I'm not able to get his question. नहीं आप टाइप कर दीजिए मुझे भी नहीं समझ रहा है आप क्या पूछना चाहते हैं आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में क्वेश्चन ठीक है सर ठीक है हाँ सर Okay. विपुल को आप अनम्यूट कीजिए हाँ जी. You can try to unmute yourself, Vipul. सर यस मनीष सर मुझे ये जानना था कि मेरा अकाउंट रिस्क आपके हिसाब से समझो कि 2000 रुपीज है ओके अब मैं ट्रेड रिस्क को उसके कैसे डिवाइड करूँ ये मैं मेरे मेरे मुझे नहीं मतलब क्या बोलते हैं देखिए अभी सपोज आप एंट्री ले रहे हैं 100 पे ओके आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं 90 का हाँ तो जी 100 माइनस 90 कितना हुआ 10 हुआ हाँ जी तो बस 2000 आपका जो अकाउंट रिस्क है 2000 डिवाइड बाय 10 कीजिए आप तो आपको 200 शेयर्स में काम करना चाहिए यू शुड ट्रेड रिस्क इज ओके 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 सर ट्रेड रिस्क मेरा 10 पॉइंट है 10 रुपीज है तो 2000 डिवाइड बाय 10 ओके ओके सर तो इट विल बिकम 200 राइट तो आई हैव टू टेक 200 क्वांटिटी ये आप बोल रहे हो ना सर ये हिसाब से करेक्ट यस प्लीज सर थैंक यू वेरी मच सर प्लीज If anyone else has any doubts, you can raise your hands or you can let us know in the chat. Kusum is asking, what about the prizes that I told in the beginning of the session? I'll be calling each and every winner directly. Personally, I'll be calling them and all the winners will be declared that way only. They'll also be declared in the WhatsApp group. Okay? I've shared a feedback form. Everyone, please fill in this feedback form before you leave because this is the only way I can know how we can improve the session. Please fill in your true feedback that you've had for the session. And Amol is asking what is trading capital, full capital, or for that day only. ट्रेडिंग कैपिटल मींस आप कितने अमाउंट से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है उसे हम ट्रेडिंग कैपिटल कहते हैं एंड व्हेन यू आर टेकिंग इंट्राडे ट्रेड्स ओके यू विल गेट 5 टाइम्स लिवरेज तो जो भी आपका कैपिटल है ओके जो भी आपको शेयर्स बाय करने आपने अमाउंट कैलकुलेट किया उसको डिवाइड बाय 5 कीजिए Sunny is asking RSI बस मंथली चेक कर सकते हैं या फिर पर डे RSI changes okay every day you will get new value of RSI. Okay, what is the accuracy of intraday strategy in back testing? 70%, 70. Okay. In Bank Nifty, are you touching options in the bootcamp? Yes, we will learn how we can trade options on day 5 Nifty, Bank Nifty. Okay, आपको option basics पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो we are giving option starter kit to you. So you can watch the videos. उसमें हमने सारे basics options के cover किए. On day 5 in bootcamp, on day 5 we will learn how we can trade Nifty, Bank Nifty using options. What is the average CAGR for intraday? See, it is very difficult to answer because every stock have different price, every stock give different momentum. So difficult to obtain CAGR. Okay. If anyone else has any doubts, we can let us know in the chat. Okay. Hargopansa, you can unmute yourself. Sir, actually this entry price is high minus the range, plus range. Entry in which strategy, sir? In RSI strategy? No, like that positioning regarding the
Position sizing. Yeah. You In have given position the first sizing, step, right? entry price at whatever price you are buying the share, okay, minus stop loss you need to do. So take for Yeah. example in BPCL, this is alert candle. So I will go long above alert candle high, which is 361.55. So my entry price is 361.55 and minus stop loss. Okay, low is stop loss. So entry, you can see the high is 375. I will take entry above 375 and I will keep stop loss 361. So this is entry minus stop loss. Okay. That entry price is calculated, right? Entry price By- is here, alert candle high, above alert candle high. Above alert candle, right? Right, above alert bar, perfect. Yeah, that means that alert candle is having a high of suppose 372. 375. You can keep 375. buffer. If you wish, you can keep 1 point buffer. Maybe you 1 can point. trade at 376. Yes. 376. Yeah. And this stop loss is Low of this candle, which is 361.55. 361.5. That is the Right. lowest, right? Okay. Right. Okay. Thank you. If anyone else has any doubts, they can let us know. Shivam is asking, I have 1 lakh, then leverage 5 times, then my stop loss is 10,000. Let me see. Just a minute. If I have 1 lakh, then leverage 5 times, then my stop loss is 10. See, when you are taking leverage, see, it should, as I told you, it should be 2% of your trading capital. Okay, do not take risk more than 2% of your own trading capital. Okay, do not count leverage in this. Okay, 2% of your own trading capital. So you should take 2,000 rupees risk only. If your trading capital is 1 lakh, risk should be 2,000. I think we're done with the doubts for today, sir. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. We had a lovely session today. We will still here for 5 another minutes. If you guys have any doubts related to the bootcamp, you can let me know. Also, kindly switch on your cameras now. This is